Good morning, students. Today we are going to start with the accounting standard 19 leases because in last session we have completed accounting standard 28, that is the impairment of asset. And before starting any session, first quickly revise names of accounting standards. So Abhishek Mishra ji, can you tell me all names? Yes, Abhishek. Okay, any other student, beta? Hardik, start beta. Good morning, Preeti sir. Kumari. Okay, wait. Preeti Kumari Vila. Yes, beta Preeti. Good morning, sir. Good morning. Okay, so let's start, sir. AS1 disclosure of accounting policies, AS2 valuation of inventories, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period prior item changes and changes in accounting policies, AS7 construction contracts, AS9 revenue recognition, AS10 property plant and equipment, AS11 the effects of changes in foreign exchange rates, AS12 accounting for government grants, AS13 accounting for investments, AS14 accounting for amalgamations, AS15 employee benefits, AS16 borrowing cost, AS17 segment reporting, AS18 related party disclosures, AS19 leases, AS20 earnings per share, AS21 consolidated financial statements, AS22 accounting for taxes and income, AS23 accounting for investments in associates and consolidated financial statements, AS24 discontinuing operation, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible assets, AS27 financial reporting of interest in joint ventures, AS28 impairment of assets, AS29 provisions, contingent liabilities and contingent assets. Very good. Preeti, have you done with your AS28? Yes, sir. Have you watched previous session? Yes, sir, I have watched. And you understood what is top-down and bottom-up test? Yes, sir, I have understood. Goodwill is allocated or goodwill is not allocated in case of top-down approach. Yes, sir, top-down approach, goodwill is allocated and top-down it is not allocated, sir. Top-down it is not allocated. Okay. Yes. And on which basis normally you allocate that goodwill? Sorry, sir. Basis for allocation. Yes, Preeti. I forgot that, sir. Fair value of the assets which are carrying, no? Not carrying. Fair value of the assets on the date of purchase, we divide it in that ratio, no? Goodwill. Goodwill on reasonable basis, we have divided in bottom-up approach. Yes, sir. Yes, sir. I got now. Fair value of the date of acquisition. 100 pages book completed? Concept book? 100 pages book. Yes, sir. It's complete. And 400 pages? Yes, sir. It's Illustrations? yes, sir. Have, have you written all illustrations? Not all, sir. Just one or two, sir. Why? You answer so well for all accounting standards. Your confidence is good. Then why not to write all accounting standards along with your question answers of uh, accounting standards, TYK questions? Afterwards, it will be very difficult, beta. Yes, sir. I You understand. you won't recall anything afterwards, because in 2 days, if you can see the performance. In 2 days, it is difficult to recall it. So after 1-2 months, it is very difficult. When is your exam? January or May? Sir, May 25. May 25. Direct entry student or foundation student? The direct entry. Direct entry student. Okay. You are from? Sir, I'm from Rajasthan but staying in Hyderabad, sir. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. प्रीति, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए अच्छे से. आपका कॉन्फिडेंस बहुत सही लगा मुझे बोलते टाइम. बट S28 का आप गुडविल भूल गए. तो अभी 3 ही दिन हुए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. ओके. Okay, sir. रिकॉल रिकॉल करना पड़ेगा आप सबको. क्योंकि ये देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट बेटा बहुत टेक्निकल है। और कोई हमें समझा रहा है तो हमें उसी दिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आईएएस बाद में कुछ भी याद नहीं आता है बेटा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाद में आपको उस दिन रिवाइज किया ना तो थोड़ा बहुत याद तो भी रह जाएगा कि हाँ ये ठीक है करके। बाद में एक एक पॉइंट याद करने को स्ट्रगल करोगे, फिर यहाँ के वहां के वापस। और आप लोग है ना, यूट्यूब के लेक्चर्स जो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, तो उसके ऊपर कौन भरोसा रखेगा कि जिनका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि रेगुलर बैच होने के बाद आप कभी देखो करके। हाँ, एक आध टॉपिक आप पूरा ही भूल गए हो तो आपको मैं ठीक है भाई देख लिया मैंने, रिवीजन क्लास देख रही। अभी इंस्टीट्यूट आप ही मुझे बताओ प्रीति, कितना प्रोवाइड कर रही है आपको, मतलब रिवीजन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस। आप लोगों के भी एग्जाम तक और एक बैच आ जाएगी, मैं एग्जाम में एक रिवीजन क्लास की। तो और ज्यादा क्या करेगी इससे, बराबर है कि नहीं? करेक्ट सर, बराबर। तो अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें घर पे अच्छे से। मैं आपको यस। डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नसीहत दे रहा हूँ। श्योर सर, आई टेक दिस पॉजिटिव फीडबैक। यस, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। आई होप एवरीवन इज नाउ अंडरस्टूड wordings of accounting standard, asset based standard. So one more time, first we have completed second accounting standard, that is the inventory valuation. In inventory valuation, what is the recognition criteria for any asset? Very good. Probable future economic benefit will flow to the enterprise. And second one is cost can be measured reliably. Very good, beta. So these are two. In any accounting standard, in asset-based accounting standard, we have two important lines for recognition. See, asset-based accounting standard, we are going through the RMPD analysis, that is the recognition, measurement, presentation, and disclosure. In case of recognition, we have completed that two wordings, two sentences: future economic benefit and cost can be measured reliably. Now, after that, for measurement, we have different criterias. In case of measurement for S2, what is the measurement criteria for S2? That cost or NRV, whichever is lower. Okay. So here we have model which is telling you that cost or NRV, whichever is lower, is the measurement criteria for S2. What is the measurement criteria for S10? Either you go by the cost model or by revaluation model. Cost model, after that you will provide some depreciation. On revaluation model, you are going to revalue your assets and liabilities, say after 1 year, or if there is a huge fluctuation, and after 3 5 years if there is no fluctuation. Okay, so that is the measurement criteria for S10. AS13, investment criteria: long-term investment and current investments. Current investment you are recording at cost or market value, which is lower. And in case of long-term investment, cost minus permanent reduction is the valuation criteria for S13. After that, S16, if interest is on qualifying asset, then only you are going to capitalize it. So it's very simple. Cost will be capitalized by interest amount if it is on the qualifying asset, and qualifying asset is nothing but it takes the substantial time. After that, we have completed S28. Whatever the impairment of assets concept is there, impairment of asset means what? There is the, you are not recording your asset at the carrying value if your recoverable amount is less than your carrying amount. And what is recoverable amount? Higher of value in use and नेट एनएसपी, नेट सेलिंग प्राइस। ओके, डिस्पोजल कॉस्ट आपको डिडक्ट करना है। सो वो होने के बाद विचर इज हायर, यू आर गोइंग टू record it if your carrying amount is higher than this recoverable amount. So it should not be overstated. Your asset you should not record at higher amount than what is the recoverable amount. Okay, that is the basic criteria for AS28. Okay, so now friends, at least you are aware about these all things, how assets are going to be recorded in the books of accounts. And we will start with the fresh accounting standard, that is S19. Leases is the accounting standard. I don't know why there is less students, because it's already 7:10 and it's time. I think many students they join after 7:15, and if you are at home, you should be punctual. It's not like we are, yes, I'm coming from my home to the office. It takes minimum 5 to 8 minutes. But other students, you are at home and still you are not coming on time. तो बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. Yes. Any difficulty till now? If you have any question related to accounting standards? No.
And disclosure based standards we already completed. So that was a quick revision. Okay, summary I am going to give you. Don't worry, beta. भावना को कुछ तो क्वेश्चन है. यस भावना जी, बोलिए. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा भावना, बोले. सर मुझे सीजीयू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आया है, उसकी सीजीयू, लैंग्वेज। यस सीजीयू सर। का क्या नहीं समझा? मतलब आपने लेक्चर देखा अच्छी तरीके से? यस सर। सर मैंने बुक्स भी रीड करी, उसमें जो 7.19 टॉपिक है ना स्टडी मैट के अंदर, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। वो ठीक है. आप है ना बेटा, एक तो पहली चीज, कोई भी चीज समझ में नहीं आई ये बोलने के पहले एक 5 मिनट है ना आपको सोचना चाहिए कि सर ने सीजीयू मतलब क्या बोला था. कि जो एसेट अकेले काम नहीं कर सकती है, जो अपने साथ झुंड में काम करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट. इट्स वेरी सिंपल. अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था. सपोज मेरे 3 सोर्सेस ऑफ इनकम है. एक मेरा प्रोफेशनल फीस है, एक मेरा क्लासेस है, और एक तीसरा मेरा अदर बिजनेसेस है. तो ये तीनों में से मैं जो भी एसेट्स उसके लिए एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो वो अकेली एसेट मुझे सपोज लैपटॉप, या अकेले मुझे कुछ काम का पैसा नहीं देगा. वो जब मेरे को पूरा का पूरा, जब मैं देखता हूँ कि मेरा पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब जितना भी वो कैश जनरेटिंग यूनिट वो डिपार्टमेंट होगा, उसमें से जो मुझे कैश मिलेगा ना, वो कैश देखना है. कभी कभी एसेट अकेले कुछ भी काम नहीं करती. जब वो साथ में लेके उसको चलना पड़ता है, तब जाके वो काम करेगी. तो बेटा ये एकदम सिंपल लेवल पे ध्यान में रखना कि ये चीज जो है, कि आप लोगों को सुनना. आज तो भी अपलोड करो रे. 2-3 दिन से वो लोग बोल रहे, क्वेश्चंस भी अपलोड नहीं किया आपने. अच्छा ठीक है बेटा, मेरा स्टाफ थोड़ा सा छुट्टी पे है, सैटरडे संडे था, तो आज मैं अपलोड कर देता हूँ. आज मैं लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर देता हूँ. ओके. तो सीजीयू का बेटा मीनिंग यही होता है कि अकेले आपका एसेट काम नहीं करेगा, वो साथ में काम करेगा. अभी ये जब साथ में एसेट्स काम करता है, तब आपको क्या होता है कि उसमें कुछ गुडविल भी होता है. क्योंकि आप सामने वाले को, कभी कभी ये बिजनेसेस, हमारे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस होते हैं, हम किसी से टेक ओवर करते बिजनेस, तो क्या होता है, टेक ओवर करते हैं ना, तो हमें उसको पैसा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा. तो वो गुडविल होता है. अब ये गुडविल डिवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद एसेट, क्योंकि गुडविल को अकेले वो कुछ नहीं रहेगा. गुडविल भी, तो गुडविल को क्या करता है, हम लोग एसेट्स में डिवाइड कर देते हैं. और गुडविल को एसेट्स में नहीं डिवाइड कर पाए तो क्या करना है, इसका भी अप्रोच एक दिया गया है. कभी कभी आप एसेट्स को साथ में नहीं दे सकते हो, एक एक एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो. बॉटम अप टेस्ट, जैसे मैंने स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताया था, आपको पूरे मोटर कार का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, नॉट उसके छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स का. वैसे ही पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. आप सीजीयू नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से जाते हैं. तो थोड़ा सा भावना जी शांति से लेक्चर को सुनिए. कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वापस में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा पूरे की पूरी चीजें इन द क्लास. तो आप एक बार शांति से दिमाग लगाइए, क्योंकि देखो है डिफिकल्ट है. आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि इंपेयरमेंट की जो क्लैरिटी भी है स्टडी मैट में, हम लोग आपको पूरा नहीं दे सकते, क्योंकि अपने अपने स्टैंडर्ड कम से कम 30 से 40 पेजेस का है. तो आपको कुछ चीजें, मैंने वो जो एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल को शांति से देखना, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा. लेक्चर को वापस एक बार सुन लेना शांति से, और ये मत बोलना कि मुझे नहीं आ रहा है. यू कैन डू इट, और वो इजी है. मैं भी जब स्टार्टिंग में, बेटा मैं पिछले बैच में, मुझे भी इम्पेयरमेंट जो था ना, वो एक्सप्लेन करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी पिछले बैचेस में. तो मैंने कम से कम उसके ऊपर 12 से 13 घंटे पढ़ाई की कि मैं उसको सिंप्लीफाई कैसे करूं, और फिर मैंने वो और इजी कर दिया. तो आप लास्ट का सेशन देखिए, शांति से देखिए, खुद से 2-3 बार लॉजिक लगाइए, अपने आप आ जाएगा. ठीक है. ओके सर। यस, मुझे पता है, और आप चेंज कर सकते हो खुद को. ऐसा नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट, वो पूरे इंडिया को ही डिफिकल्ट जाता है. ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स, में मैंने प्रैक्टिकली भी मेरे फ्रेंड्स लोगों को पूछा, तो वो अलग लेवल पे है इन रियल लाइफ. तो ओके सर। आप थोड़ा सा वो एग्जाम ओरिएंटेड भी रखो उसको, और समझने की कोशिश करना कि क्या क्या दिया हुआ है. क्योंकि आप देखोगे ना, मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है ये बैच में, आप पिछले बैच से कंपेयर करोगे तो. ओके सर। ठीक है. यस. यस रोजालिन. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग.
सर मेरा ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि सर अभी हम लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं मे के लिए, तो हम हम्म पूरा का पूरा सर 6 पेपर्स करें या 3 पेपर में अभी फोकस करना चाहिए? देखो, आज से भी शुरुआत किया तो भी 6 पेपर्स पे करना चाहिए। और ये हमेशा बेनिफिशियली होता है, क्योंकि देखो, आप जब तक 6 पेपर्स के एग्जाम नहीं निकालोगे तब तक आपका आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट होने वाला है। तो अभी से ये माइंड में नहीं आना चाहिए। यदि आप, हाँ बाबा, बहुत लेट चालू हुआ है तो आई कैन से कि यू गो फॉर द फर्स्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि स्टूडेंट्स के फिर माइंडसेट ही बदल जाता है कि मुझे 3 ही सब्जेक्ट देने हैं। अभी 3 सब्जेक्ट देने हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि हम लोग रिलैक्स होते हैं। आज सर आप जितना प्रेशर में काम करोगे ना, उतना आपका ज्यादा होगा। कोई भी देखो, हम लोगों का भी क्या होता है, रिटर्न्स भरने का टाइम होता है 31 जुलाई और 30 सितंबर। और हम लोगों के पास पूरा साल होता है, तब हम लोग कुछ करते नहीं है इतना फास्ट। एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा। अभी कुछ लोग होते हैं हमारे सीए कोर्स में, दे आर वेरी पंक्चुअल। सीए कोर्स में नहीं, आफ्टर बिकमिंग सीए ऑल्सो। तो हमारे कुछ लोग जो है वो पहले से प्लानिंग करते हैं, तो वो बहुत डिटरमिन रहते लाइफ में। और 50% लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिनका हमारा ऑडिट जो स्टार्ट ही बहुत लेट होता है, क्योंकि क्लाइंट से इंफॉर्मेशन भी बहुत लेट आता है। तो वो केस में क्या होता है, वो लास्ट के 2 महीने में हम बहुत प्रेशर लेते, एंड वी कंप्लीट एवरीथिंग जो एक्चुअली साल भर में करना चाहिए प्रॉपर वे में। सर वैसा ही मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ये तो सीए सिखाता ही है हमें। तो ये सीए कोर्स ही आपको ये सिखाएगा कि प्रेशर में कैसे काम करना है। और वो इसीलिए एक ग्रुप पे मत जाइए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एटलीस्ट सेकंड ग्रुप इजी है मैं बोलूंगा फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप अकाउंट्स है, डायरेक्ट टैक्स है, दो दिग्गज सब्जेक्ट बैठे हुए हैं। और लॉ भी थोड़ा वैसे देखने गए तो टेक्निकल में आ जाता है। सेकंड ग्रुप में थोड़ा सिलेबस एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप में बोलूंगा कम है। कॉस्टिंग, एफएम, इफ यू गो विद द प्रॉपर फ्लो, ऑडिट है, और एसएम तो स्कोरिंग है। एफएम एसएम स्कोरिंग हो जाएगा, कॉस्टिंग भी थोड़ा दिमाग लगाया ना। आपको प्रॉब्लम यही होता है कि कॉस्टिंग में व्हाई यू फाइंड कॉस्टिंग डिफिकल्ट, क्योंकि 50 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस है। अकाउंट्स में वैसा नहीं है। अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स, बट सिलेबस इज वास्ट। डायरेक्ट टैक्स में 50-50 है। जीएसटी इजी बोलूंगा, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट बोलूंगा मैं, सिलेबस वाइज। तो आप थोड़ा सा पूरा कंट्रोल कीजिए खुद के सिलेबस पे। स्टार्टिंग से ही थिंकिंग मत रखिए कि एक ग्रुप पे जाना है, बिकॉज फरवरी में आपका पूरा बैचेस खत्म हो जाएंगे। मार्च अप्रैल आपको पूरा रिवीजन के लिए मिलेगा। और वैसे भी एक ग्रुप ही निकाला तो आर्टिकलशिप इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट। तो अपने को जब तक ये, और 3 महीने में एग्जाम है, सो बेटर है कि दोनों ग्रुप दीजिए। पेपर डिफिकल्ट गए तो स्टार्ट यूर स्टडी इमीडिएटली। और उसके बाद वापस जो ग्रुप पे फेल हुए रहेंगे वो दे देना, पर दोनों ग्रुप का सोचना। ठीक है, एटलीस्ट दोनों ग्रुप में से एक दो सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा अच्छे से करके जाइए। और वो एग्जाम्शन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 7-8 महीने में भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। बिलीव मी, वो लास्ट डे तक नहीं होगा। आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे और एक ही ग्रुप देती हो। Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, that I am holding June 2024 reprint edition of study material, sir. For हम्म May 2025, whether it is sufficient or we have to take latest version again, we have to purchase the study material, sir. No, Can no you need. guide? There are not many changes in the study material. Only 1 or 2 questions are added. So you can check it. It is at the end of the topic, TYK questions. Some questions are added for accounts also. I think for costing FM also, they have not added anything. So we can One continue, or no, sir. two, Same study yes. material, we can continue. All I only for direct tax, I don't know. And theory Remaining, we can subjects, continue, no, sir. Remaining yes, no accounts, problem. there will not be any addition, no, sir. Accounts. Whatever additions I already taken over here. Okay, Okay. okay. Okay, chalo. So let's start. Yes. Now I'll take your questions at the end. And don't think for the one group, huh? Students. Think for both groups. Chaliye. So let's start. Today we are going to start with the fresh topic, that is the Accounting Standard 19 leases. Again, one of the technical topic, leases, because there are two types of leases. What is this concept is basically I will give you the guidance about AS19, why this accounting is different. See, here we are following one important word, that is the substance over form. Substance over form, running notes में लिख के रखना.
Yes. Running notes. Take 2 rough pages. Substance over legal form. Now see, look at the substance of the transaction and not legal form of the transaction. Now what is leases? Leases means in simple language. I will teach you in the very simple way what is exactly leases is. See, one party means who is a legal owner of that property. Okay. He gives that asset to some needy person. The needy person is called as lessee in the books. Lessee means in simple language, he is a tenant. And landlord is the owner of the asset. So we will call him as, in this transaction, lessor. Lessor is a party who is having that asset, who is ownership of that asset, and he transfers possession. Okay. He does not transfer any ownership. Otherwise, it is a buy-sell transaction. So he transfers only possession to that party. तो आपको इतना ही याद रखना है कि हम लोग पार्टी को यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो होता है वो ओनर होगा और दूसरा जो होगा जो यूज करने वाला लेसी होने वाला है. तो लेसी जो है उसके पास सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होके आया है कि भाई तू एसेट को यूज कर. तो इट्स वेरी सिंपल. हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड द एसेट? तो बड़ा ऑब्वियस, लेसर विल रिकॉर्ड द एसेट इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, डोंट थिंक फ्रॉम द अकाउंट्स लैंग्वेज. ओके, asset will be recorded and then lessor will get lessee say some rent. Okay, lease rental we will call it as. And owner transfers right to use the asset. What he transfers? Right to use this asset and pay me something in consideration, in return. So this is a rent. So why there is need of accounting standard in that case? Simple as sir. It is nothing but you are transferring right and you are getting rent. So you lessor will record as income and lessee will record it as expenses. So there is actually no need to introduce any accounting standard. इसके लिए सर कोई accounting standard क्या issue कर दिया आपने? ये तो कितना simple है. 2 lines में खत्म हो गया. Income will be recorded by the lessor and expenses whatever amount will be paid will be recorded by the lessee. But student, this is not the simple only transfer of possession in real life. What happens? Major economic life of that asset, it might be transferred to lessee. And accounts always gives preference for substance and not the legal form. This is not the law. We are doing accounting, and our apex body, that is Institute of Chartered Accountants of India, always tells you why are you see the legal ownership. See, legal ownership is not important. For example, if a car is in name of my mom, still I can claim the depreciation in accounts. Even in income tax, if you prove this. So control is important. Who is the legal owner is never important in accounts. Remember this thing. Accounts कभी भी आपको लीगल ओनरशिप के बारे में नहीं बोलता है. कोई भी लीगल ओनर रहने दे. अकाउंट्स बोलता है कौन उसका कंट्रोल करता है. अभी अजीत सर है हमारे, तो उनकी एसेट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड हो सकती है क्या? हाँ, यदि अजीत सर की कोई एसेट मैं कंट्रोल करता हूं, नाम पे अजीत सर के है, बट आई एम यूजिंग दैट एसेट. सर वो तो थर्ड पर्सन है. स्टिल अकाउंट्स ये राइट देता है. सर लॉ में नहीं मिलेगा. रिमेंबर दिस. इन लॉ legal owner is important. In accounts, who is controlling that asset is important. Got the difference between two? So sometimes it may happen that we are not recording it like expenses, but we will record it like asset in the books of lessee.
लेसी के बुक्स में we are going to record asset. So lessee के books में asset. Yes. And when you are in simple language, when you are aware that out of suppose life of the asset is of 5 years and asset is held by the lessee for more than 4 years. Life of the asset is 5 years and major economic life you have entered into the non-cancelable agreement. See, lessee has already spent a lot of money on that. And therefore, normally when you don't want to enter into a rent transaction, you want to enter into a long-term transactions, then beta lease agreement is normally prepared. 99 years ka lease. You have heard the word 99 years ka lease. So during your life, that lessor is not going to remove you from that business because you already incurred some capital expenditure as a lessee. And that capital expenditure, how if he removed you from that premises or anything, or if he holds the right back, lessor, then beta it's a huge loss for lessee. And therefore these transactions are normally non-cancelable transactions. तो आपको कोई भी बोलेगा कि सर लीज वर्सेस सर लीजिंग ऑफ हाउस इज अ डिफरेंट थिंग. Okay, that is a different thing. We are not going to cover it in this transaction because land is not covered over here. Land is on lease. Now we have a big projects over here in Pune. Okay, कौन सा है वो सिंहगढ़ रोड का नांदेड़ सिटी. So almost more than 800 societies over there. Okay, 500 plus societies over there. And that land, who has constructed it, that project is on lease of 99 years. Okay, so legal owner will get that rights once again. But after 99 years, 99 years के बाद हम लोग थोड़ी जिंदा रहने वाले हैं. तो we won't think of that. Okay, but वो जब है तब जो भी होंगे अभी अपने 3 आगे की पीढ़ियां, तो वो क्या होने वाला है, वो राइट्स जो है ना वो उनको मिल जाएंगे वापस से लीगल ओनर को. So we are not going to cover over here this. Okay, we will cover other than land in this accounting standard. So that is in the form of exceptional part. Okay, so वो हम लोग यहाँ पे accounts for नहीं करेंगे. Here it's very simple. One asset is giving on the one party is giving that asset on the lease to another party. Either he will record as income or expenditure. Okay, whatever the case. Or now transaction shuffles. It happens that lessee will record the asset. He will record the depreciation. And remember, asset and depreciation recorded by the lessee. And he will record interest as expenditure. It's like your Bajaj Finance, you have taken some asset on installment. So what is your expenditure? Expenditure is interest. Okay, and he will record, lessor will record interest as income. So whatever the lease amount is not, it is bifurcated in 2 parts. Whatever the installment will be bifurcated in 2 parts. One is principal and second one is interest. Interest will be recorded as expenditure or income. And in case of some lease that I will explain you, installment is not divided in principal and interest. Whatever the installment amount will be either expenses for that person or income for another person. Okay, so there is no bifurcation, principal plus interest. That bifurcation is not in operating lease. Usko kya bolte? Operating lease. You can write that sentence. In operating lease, principal and interest bifurcation is not there. And in finance lease, we bifurcate it in 2 parts.
principal and interest. And that's accounting. We are going to understand it in this chapter. This is a very simple standard once you got the logic of this. Is it difficult? So how many leases are there? Yes, raise your hand. कितने लीज है बाबा? बोलिए जल्दी. Yes, Ajay Surya. बोलिए. Good morning, sir. Good morning, There brother. are two leases. One is operating lease, another one is financial lease. हाँ. In operating lease, In operating lease, the lessee has only the principal and use interest the amount is not bifurcated in simple language, layman language. I will give you technical definition, don't worry. But in simple language, what you can call it as principal and interest bifurcation is not there. So whatever the installment you pay, one will record as expenses. Who will record as expenses? Lessee. And lessor will record it as income. Got the concept? Yes, sir. Okay, and in case of finance lease, you will bifurcate your whatever lease rental in two parts, principal and interest, and lessee will record the asset. Who will record the asset? Lessee Lessee. will Lessee record the means user of that asset is going to record the asset. And why he is recording it? Because of substance over form concept. Because of substance over form concept. Substance is important and not legal form is important. Substance over legal form. Okay, sir. Okay, very simple. Yes, sir. Have you read this accounting standard before? Yes, sir. But I cannot understand now. Long ago, I read that. Okay. Have you watched my lecture or not? Yes, sir. I'm continuously watching your lecture. Before, No, for S19. no, sir. This is Oh, you're first. doing it for first time with me. Yes, sir. Okay, no problem. Okay. Yes, Sai Kiran. Sir, when one lessee is recording the book's depreciation, whether it is to be ensured that the other one is not doing it, whether we have to insure it or not, sir. But he also won't record it because he also is aware of accounting standard, no? Huh, That so leave about yes. leave Now about the client, sir. I'm asking whether auditor has to insure it or not. I'm asking. now that lessor actually is not recording it as an asset, but he should not. He should follow S19. But now whether he's following it or not is a question. Again, we won't go it in that detail. He should not follow it. Okay, if he's following that S19, if he's not following, but it's his responsibility. Okay, sir. Okay, so well, legally he should not follow. Oh, sorry, by S19 is not giving him right to record it as an asset if it is recorded by the lessee. ठीक है? Okay. Yes, तांबेश्वरी जी बोलिए. Sir, can you explain operating lease? In this case, sir, lessee's recorded expenses, sir. Lessee record his expenses. I will explain it. Okay, I have given you idea. सो सिंपली आपको इतना ही याद रखना है तांबेश्वरी जी कि एसेट जो है ना वो कौन रिकॉर्ड करने वाला है. तो एसेट एक केस जो होती है ऑपरेटिंग लीज उसमें एसेट लेसर ही रिकॉर्ड करेगा. बट फाइनेंस लीज में वो एसेट रिकॉर्ड करेगा लेसी. बस इतना ध्यान में रखिए. अभी जब एसेट ओनर ही रिकॉर्ड करेगा तो वो लीज रेंटल को इनकम मानेगा और दूसरा लीज रेंटल को एक्सपेंडिचर मानेगा. एंड फाइनेंस लीज में क्या होगा? फाइनेंस लीज में एसेट की भाषा ही बदल जाती है कि जो यूज कर रहा है वो एसेट रिकॉर्ड करेगा. तो वो बैच दे रहा है. जैसे बजाज फाइनेंस का आप लोग देते होगे, कभी अपने लोन पे कुछ लिया होगा तो वो सिंपल लोन ट्रांजैक्शन हो जाता है फाइनेंस लीज में. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बस, बाकी कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लीजेस. ओके, S19 introduction part, it prescribes the appropriate accounting policies and disclosures in simple bhasha. Appropriate accounting policies, so you understood it now. Policies means what? Principles which we follow while preparation of the financial statement. Chapter number 1, policies.
principles which we follow for the preparation of financial statements and disclosures are MPD analysis. Disclosures in notes to accounts. Applicability. Level 1 enterprises fully applicable. There are some now small enterprises, they won't apply it, okay? Lessor and lessee transactions, but they have some disclosures exemptions also. So in real life, you will understand it. So now at this level, you have to understand that level 1, some paragraphs are applicable, and level 2, 3, 4, all paragraphs are applicable for level 1, and some paragraphs are exempted. Not go in detail. All leases other than leases agreement to explore for such natural resources. So natural resources we won't cover over here. KGF. So KGF आपको सबको पता है, gold mines. No need to apply this accounting standard. Licensing agreement for items such as motion picture films, because it is covered under accounting standard 26. All these rights, how we are going to record, we will see accounting standard 26 in the next session. Not next session. We have 2 days to complete it. And lease agreements to use the land. So land is not covered over here. So if land is given on the lease, it is not covered over here. Okay. So lease agreement we won't cover over here. Okay. Ekdam simple hai. Now we'll see some definitions. What is a lease? Lease means is an agreement between lessor who is a legal owner of that asset. He gives right to control the use of, that is the lease asset. That asset is giving on the lease to the lessee for a period of time for the consideration. So this definition is now very easy for you. This is an agreement between lessor and lessee, who lessor is giving right to use the right to control the use of the lease asset to whom? To lessee for a consideration for a period of time. So lease terms are also defined. Lessor-lessee relationship is also defined, and ownership is not transferred. Only right to control the use is transferred. Any difficulty in understanding definition? No, sir. Diagrammatic presentation के वजह से सब याद हो जाता है. No problem. Now it is non-cancelable lease. See, a lease can be cancelled only if. So it can be cancelled, but this is a long term. क्यों लॉन्ग टर्म होता है? बिकॉज रेंट में 11 मंथ्स का नोटिस देके आप लोग क्या करते हो? यू प्रिपेयर रेंट का 11 मंथ्स का ही ट्रांजैक्शन. वाई यूर इनकम टैक्स फैकल्टी विल टेल यू कि 11 मंथ्स का क्यों होता है. क्योंकि नहीं तो क्या होता है भाई, ये थोड़े साल के बाद वो लोग ज्यादा टाइम रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी उनकी कहलाई जाती है. हाँ, वो उसके वजह से डर जाते लोग, बोलते 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. 1 साल तो रह ही नहीं रहा है यहाँ पे. ये बताया जाता है. ये कितने महीने था? ये 11 मंथ्स था हमारे पास. सो दैट इज दी. नहीं तो गवर्नमेंट ने बेटा ये हुआ ना ऐसा कि जिसकी जमीन है, जो उसके ऊपर वो ओनर छोड़ दो, पर जो वो जमीन के ऊपर काम कर रहा है उसकी वो जमीन हो जाएगी. ये जब पॉलिसी आई थी कांग्रेस के टाइम पे, तब फार्मर्स लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो गया था जो एक्चुअल काम करते थे. तो वैसा ही प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए रेंट इज ऑफ 11 मंथ्स. ठीक है. एंड लीज इज अ लॉन्ग टर्म and it is non-cancelable upon occurrence of some remote contingencies. लेसी मरी गया, कोई उसका वाली नहीं है आगे का, तो बेटा वो केस में we are going to cancel that lease. Otherwise it is non-cancelable. Remote contingencies, very rare problems. Okay, with the permission of the lessor. With the permission of the lessor. If assets, lessee enters into assets, a new lease for the same or an equivalent asset with the same lessor, and upon a payment by the lessee of an additional amount such that at inception continuation of the lease is reasonably certain.
Riddhi is asking me, sir, why 11 months contract? Okay, explain it in English. Beta, what happens in 1975 or 1970? Okay, government announced a rule. If you are working on the farm for more than, I think, 20 years, 15 years, then that land was not belonging to that landowner, but who works on it, that farmer, he was the legal owner. And therefore, normally, what happens, people, they are doing lease instead of doing 1 month agreement, 1 year agreement, they do 11 months agreement. Okay, because they don't want to they don't want, they means, if suppose they are not preparing agreement of 11 months, 1 year, it might happen that government changed rule and ask that tenant, or ask that lessor means the landlord, that property is not belonging to you because that property already you rented out for more than these years, and it might happen now ownership may get changed. So for no more complications, we enter into 11 months agreement. Okay, not full year agreement. This is a logic. ठीक है? नहीं होता है नॉर्मली नितिन, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, वो रेंट प्रॉपर्टी के इसमें ही होता है 11 मंथ्स का. रिद्धि, यू अंडरस्टूड 11 मंथ्स एग्रीमेंट? So future complications are avoided by doing this 11 months agreement. That tenant is not with in my property for more than 1 year, so that you can show it. Okay. Yes. Upon a payment by the lessee of an additional amount such that an inception or continuation of the lease is reasonably certain. Now, what is lease term? Okay, if the lessee enters into new lease for the same or equivalent asset with the same lessor. Now, it might happen that lessor is asking for more rent, because now, and lessee is also ready to give that more rent. Suppose if market value changes of that property or for that asset, and lessor is saying, please reconsider it because you are also earning money out of this. It might happen that lessee is asking for lower rent and they come with the new agreement. It might happen. दोनों भी possibilities हो सकती है. So mutual understanding से you can do that. Okay, and you can pay additional amount and you can cancel the contract. Okay, so this is also possible with mutual understanding. So upon a additional amount such that its inception continuation of the lease is reasonably certain. तो कुछ additional amount pay कर दिए तो lease transaction cancel भी कर सकते हो. What is lease term? That is a non-cancelable period for which lessee has agreed to take on the asset on lease. So this is common sense. What is the lease term? तो जितना भी asset आपने term के लिए आपने decide किया है, agreement में decide किया है, that is the lease term. Minimum lease payment. Now this definition is very important. Lease payment. Now you have to understand two more words. Lease payment is considering GRV. See, lease rental. Lease rental means per annum, whatever the lease, you will consider that. Plus GRV. Now, what is GRV? Guaranteed residual value. Now, what is guaranteed residual value? When your lease transaction is getting over, at that time, lessee will give guaranteed payment to lessor so that now asset will be with lessee, or asset ownership is with lessee at the end of the lease transaction. So when there is a finance lease, okay, finance lease name itself suggests you. In case of finance lease, lessor is not interested to keep the asset for
major economic life of that asset. For example, life of the asset is for 5 years. And lessor is telling you that you continue with that 5 years. I am not interested. I want only rental every year. So he's not giving you asset for, or suppose after completion of the 5 years, lessee will give him an offer because he already collected the huge amount from the lessee. His principal amount is already get covered. Okay, got the concept. So principal amount is already covered in this transaction, and now lessee, it's a simple only formality that now asset is almost, its life is over, and lessee will ask him ki still, okay, 6 months, 8 months, 1 year life is still remaining of that asset because lessee use that asset in very proper way. And lessee will ask him ki give me this asset at the end of the lease term. At this amount, I am giving you the guarantee in the inception of the contract. Okay, at the time of inception of the contract, I will take this asset from you at 1 lakh rupees. If this guarantee is given by lessee to lessor, that is also a part of lease payment, that guaranteed residual value. But from lessor's point of view, this is from lessee's point of view, lessor may consider unguaranteed residual value as his minimum lease payment. ओके, एक ध्यान में रखना ये मिनिमम लीज पेमेंट जो होता है, हमारा हर साल का लीज तो है ही, हर महीने का, साल का, जैसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पर उसके साथ साथ फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में नहीं, फाइनेंस लीज में क्या होता है कि लेसोर लेसी को बोलता है भाई 5 साल लाइफ है ये एसेट का, ये 5 साल एसेट तेरे पास ही रहने दे। तो वो ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, लीगल ओनरशिप भले लेसोर के पास रहो, बट अल्टीमेटली लेसी कंट्रोल कर रहा है। तो एक टाइप का लोन ही दिया है ना, ये तो एक टाइप का लोन दिया है, तो इंटरेस्ट अमाउंट एक दूसरे को रिकॉर्ड करना है। और लेसी क्या बोलता है कि भाई अभी साल भर का लाइफ तो 5 साल का खत्म हो गया, तो 5 साल के बाद का जो एसेट का वैल्यू है वो मैं आपको लास्ट में मुझे थोड़े अमाउंट में दे दीजिए, मैं आपसे इतने साल तक वफादार था। तो 1-1 लाख रुपए आप मुझे हर साल में दे ही रहा था, 5 लाख रुपया और 50,000 रुपए ले लीजिए, 3 लाख रुपए ले लीजिए और एसेट मेरे नाम पे करके दीजिए। भाई कोई गलत चीज तो है नहीं, लेसी की लाइफ भी खत्म हो चुका है एसेट का, लेसोर भी एग्री हो गया भाई ठीक है ना, ऐसे भी एसेट खत्म हो जाएगा, गारंटी तो दे रहा है वो। पर कोई लेसोर ये लालची इंसान है, वो बोलता है कि मैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू पे खुश नहीं हूं, मुझे मार्केट से और कोई ऑफर आई है, मैं तुझे क्यों दूं, तू तो 1 लाख रुपए दे रहा है, वो सामने वाला 1.5 लाख रुपए दे रहा है, मैं क्यों छोड़ू मेरा 50,000। तो वो अनगारंटेड भी उसका इनकम बोलेगा। तो मिनिमम लीज पेमेंट में लेसोर के केस में यूजीआरवी भी आएगा, अनगारंटेड। जो बाहर वालों को 1 लाख तो ये दे रहा है, बाहर वाला 1.5 लाख दे रहा है, तो 50,000 एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, वो यूजीआरवी 50,000, 1 लाख तो सामने वाला ऑफर कर रहा था। फिर वो बातचीत करेगा लेसी से, भाई देख 1.5 लाख तो वो दे रहा है, मैं क्यों मेरा नुकसान करूं। लेसी को इंटरेस्ट रहेगा तो एसेट रखेगा, नहीं होगा तो बेच देगा। वो बोलेगा लेके जा भाई, 1.5 लाख वाले को दे दे, मैंने इतना गंदा तरीके से यूज किया हुआ है एसेट, दे उसको, उसका तो वो भी प्रॉब्लम होगा, हो सकता है अभी, वो उसकी बात है। तो मिनिमम लीज पेमेंट इज अ लीज रेंटल, जीआरवी एंड यूजीआरवी। So UGRV who will consider? Lessee will consider. Lessor will consider. And lessee will consider only GRV. Both record different values. Very good, beta. Rashmi ji, very good. So minimum lease payment for lessor is different. He considers UGRV and minimum इसके लिए अलग होगा. It's a simple lease payment that you are doing every year plus GRV in case of lessee. We are going to solve some illustrations. फेयर वैल्यू वही घिसी पिटी बात है भाई, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, अमाउंट एट विच दे कुड बी एक्सचेंज और लाइबिलिटीज सेटल बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, सो
fair value का definition no change. Residual value means at the end of the lease term, whatever the value is given, the estimated fair value of an asset is called as residual, scrap value. In simple bhasha, it is a scrap value. Residual value is of two types. GRV for lessee. It is the guarantee by the lessee or party on his behalf. Okay. And for lessor, guaranteed by the lessee or independent third party. GRV, independent third party has given the guarantee कि I will take that asset. Guaranteed by lessee, sorry, इधर guaranteed by lessee चाहिए, बदल देना. UGRV is residual value minus GRV. No guaranteed. Now see, in accounting standard 10, we have seen the definition of depreciation is the value which is divided over useful life. So S10 gives priority for dividing your depreciation over useful life. But in lease, we have economic life. It might be greater than useful life. It might be less than the useful life. So suppose if I'm using this laptop, economic life of this laptop is 5 years. 5 years I can earn money out of this laptop. And after that, I will give it in the office or to my son. Useful life is there, but I'm not earning any amount from that. That is called as the economic life. Economic life means from which you are earning something. And there will be some cash inflows or outflows for you. But useful life, you may earn or you may not earn. Okay, that is called as the useful life. So there are differences in economic life and useful life. Got the concept? So ये लिखो यार, कुछ तो लिखो. Economic life is the period over which asset is expected to be economically paisa usable by one more person. Money is the economy. The number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users. Okay. So economic life is different and useful life is different. आया समझ में? Next. Useful life is either the period over which the asset is expected to be used. पैसा नहीं मिलेगा. And the number of production or similar units are expected to be obtained from the use of the asset by the lessee. So useful life is different and economic life is different. What is UGRV? Unguaranteed residual value is residual value over guaranteed residual value. So we already covered. And gross investment. Now, what is gross investment? Because here we are going to consider some present values which we calculated in the impairment of asset while calculating value in use, and you are already calculated in the financial management. So present value means discounting करके जो आता है, and without discounting is called as gross investment. Okay, discount करे बिना. For example, lease rental, I'm going to pay 10,000 per annum for next 5 years. So 10,000 into 5 years, 50,000 is the gross investment in simple language. And in net investment means you will discount that 10,000 by some discounting factor and you will calculate the present value, and that present value means net investment, matlab interest minus karke. And difference between gross investment and net investment is nothing but it is interest amount. Finance charges, we will call it as finance charges, that is interest. Finance charges means interest. So gross investment is what? It is a simple multiplication. Whatever you are paying,
multiplied by number of years for which you are going to you are giving that asset on lease is taking that asset on lease is called as the gross investment and net investment. See, investment who is for investment is for whom? Investment is for lessor, lessee, both bhi ho sakta hai. Okay, so gross investment is nothing but it is the simple lease rental multiplied by lease terms, and net investment is nothing but it is the, yes beta, minimum lease payment जो होगा वो plus UGRV. मिनिमम लीज पेमेंट यू ऑलरेडी कंसिडर्ड, यूजीआरवी में क्या है, एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, minus this is called as net investment, present value of minimum lease payment. When you consider present value, we are going to see calculations, so don't worry, we are going to see these calculations. Question 238. Yes, first we will calculate it, so theory will be very easy for you. Yes, till देखो थोड़ा टेक्निकल है आज का सेशन, मैं पहले ही बोल देता हूं कि स्टार्टिंग में नहीं समझेगा पर बाद में तोते के जैसा बोलोगे. एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल व्हेन आई विल टेक सम एग्जांपल्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म. तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिस वर्डिंग्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट. आई वोंट से कि दिस इज वेरी इजी स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड. नो, यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर 1.5 year. 1.5 year बोला आप आर. Okay, so 1.5 hour you have to keep patience, then only you are going to understand these questions. ठीक है, तो तुरंत बिल्कुल भी पेशेंस लूज मत कीजिए. स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है. सो सम स्टूडेंट्स विल थिंक दैट कि अरे बाप रे ये क्या इतना टेक्निकल चल रहा है. थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय मुझे दीजिए. यस, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. आप म्यूट एक सेकंड ना. हाँ जी मनीष जी, मुझे लगता है आप भूल गए हो पूरा अभी आजकल जूम. अच्छा, मैं वो अनम्यूट का मैं खुद करूंगा वो पार्टिसिपेंट्स. यस, ठीक है. तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, आई होप यू अंडरस्टूड इट. So we'll solve some illustrations. So what exactly I want to tell you, I will summarize that so it will be easy for you. देखिए, 3 कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझानी है. One is gross investment, one is net investment, and third one is difference, इसको बोलते unearned finance income. This difference is called as, what is gross investment? For lessee, it is lease rental multiplied by lease term plus whatever guarantee he has given. It is only for lessee, and lessor will consider in it UGRV also. Who will consider? Lessor. And this is for lessee plus lessor. ये both के लिए है. This value is for both. And UGRV who will consider? Unguaranteed. Lessee, why he will consider? He has not given any guarantee. At the end of the lease term, that I will take that asset back. Not back, I will retain that asset. I will take back मतलब lessor के पास आएगा. No. Who will retain that asset? Lessee will retain that asset and he is giving some guarantee. Extra amount. I will take that amount at that amount. So that is a guarantee. But lessor, he is not but a happy person. He wants something extra. And that extra is nothing but it is a UGRV. And what is net investment? Net investment is all these calculations we are doing at the present value calculation, because lease terms 5 years. You are paying lease on different years. So today's value will be called as net investment. Today's value. Why you are calculating today's value? Because it's a principal amount. Today's value is a principal amount. And on that every year, he will pay interest similar to that. And these calculations we have to understand in this chapter.
and when it is going to happen when it is not operating lease, when it is a finance lease. What is finance lease? We will see what is finance lease. Indicators. Finance lease के indicators. हाँ, ये देखो. Yes, we'll see some types of lease. Then, beta, it will be easy for you. So there are two types of lease. So you basically you got the difference between two. Yes, beta. समझ में आया? Some yes. One student I want explanation in English, and one student I want explanation in Hindi. Who will explain? Who will explain in English? Rashmi ji, whatever we understood till now. गुड मॉर्निंग सर. हाँ. सर सर हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे. एक सेकंड ना रश्मि, आप किस में एक्सप्लेन करोगे बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ. यस रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ, किस में एक्सप्लेन करोगे आप? इन इंग्लिश और हिंदी? अरे आप अनम्यूट करो ना खुद को, क्यों बार बार म्यूट कर रहे हो? हिंदी में सर. हिंदी में. चलो बोलिए जल्दी जल्दी. सर यस साई किरण जी और अदर स्टूडेंट्स बेटा, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश ऑल्सो. हाँ बोलिए. आई अंडरस्टूड. प्लीज हिंदी में बोल रहे हो ना आप? यस सर. तो बोले ना हिंदी में फिर. सर टू टाइप के लीज होते हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. व्हेन फाइनेंस लीज इज कंसीडर व्हेन एसेट इज रिकॉर्डेड. एक ही लैंग्वेज को प्रेफर कीजिए सभी, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ अभी. हाँ जी सर लेजी रिकॉर्ड करता है हाँ. एसेट को, तब वो एज अ कब रिकॉर्ड करता है लेसी? फाइनेंस लीज में या ऑपरेटिंग लीज में? फाइनेंस लीज में लेजी रिकॉर्ड करता है एसेट को, एंड हाँ. ऑपरेटिंग लीज में लेजर रिकॉर्ड करता है एसेट हाँ को. हाँ एंड ठीक है. फाइनेंस लीज मैक्सिमम यूज करता है जिसमें मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट डेफिनेशन. हम मिनिमम लीज पेमेंट प्लस लीज रेंटल. लीज रेंटल, लीज रेंटल जो एवरी ईयर हम लोग देते हैं प्लस जीआरवी, ये लेसी कंसिडर करेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में. एंड लेसर जो है वो उसमें यूजीआरवी ऐड कर देगा. यस सर. और उसकी यदि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और दोनों का डिफरेंस ये अनअर्न्ड फाइनेंस आएगा. फाइनेंस आएगा, फाइनेंस इनकम या फाइनेंस एक्सपेंसेस. समझ में आया? यस सर. यस. अजय सूर्या. Good morning, sir. First, lease is a agreement between lessor and lessee to transfer the right of use of the asset for consideration. And we have two type of leases. One is operating lease, another one is financial lease. In operating lease, the expenses are carried by the lessor, and in financial lease, the lessor do not caring about that useful life. Asset is not recorded by the lessor. And lessee will record the asset. Okay. Okay, sir. And this accounting standard, we did not consider. What is gross investment? Gross investment is roughly calculation of invested amount, not considering net present value. It only. This is the pure without discounting value. Okay. Okay, sir. And for gross investment, for lessor it is same or different from lessee? Different from lessee, sir. Why? Because lessor only calculate lease payment plus GRV plus UGRV, but lessee only calculate lease payment plus GRV. GRV. Very good, very good. And net investment is
by taking present value. Yes, sir. बराबर है? Yes, Yes, sir. perfect बेटा. बस इतना भी याद हो गया तो भी बस है. Yeah, very good बेटा अजय. Thank you, sir. You understood it perfectly. Yes. Any other student who has confusion can raise their hand. If you are not getting a simple or any sentence. So everyone is clear with lease concept? Nothing difficult? अच्छा आदित्य जी, हाँ बोलिए बेटा आदित्य. बोलिए बेटा. आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो खुद को. ठीक है, तांबेश्वरी. Sir, I asking you that gross invest in this finance lease या फिर operating lease? Only in finance lease. Operating lease में no more concept. Okay, sir. यही doubt sir. Operating lease is nothing but you are paying in rents to that person. In simple way, you will record it as expenses, and your landlord will record it as income. There is nothing difficult in that. Operating lease is very simple to understand. It is not giving asset for major economic life. So if suppose life is 10 years, your giving asset is only of 2 years. Okay. So Tambeshwari, in that case, lessee will record expenses and lessor will record income. Asset will be recorded by lessor only. Okay. Asset is not in the books of, so substance over form concept is not used over here. It is only for finance lease. It is only for finance lease. Okay. Sir, I can tell this concept, sir. Yes. Explain. Operating lease in this case, lessee is record expense and lessor record asset. And finance lease in this case, lessee record asset and income, interest on income. Expense. Expense. He will record as interest expense. No, he is paying it. Yes, sir. Interest on expense and lesser record interest on income. Okay. And yes, sir. In this gross investment case, lessee rental multiply Lease term. rental. Lessee rental नहीं, lease rental. Okay, sir. Lease rental multiply lease term plus GRV plus UGRV in case lessee is record and lessor is record only UGRV. Only UGRV नहीं. He is record additionally UGRV. Oh, okay, sir. He records Additionally, lease rental over here plus GRV, and additionally he records UGRV. And net investment in their case is present value record. Yes. And next is Unearned finance means difference between gross investment and net investment. ठीक है, ठीक है. Okay, sir. Very good. Okay. हाँ, ठीक है. बोले आदित्य भाव. अरे आदित्य, मैंने अनम्यूट किया आपको. हाँ जी, बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बोलिए. सर, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो यूजीआरवी कंसीडर करना है, वो लेसर के केस में करना है या लेसी वाले में? लेसर के केस में करेंगे. मींस लीज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू किसको मिलेगा? लेसर को मिलता है ना. लेसर लालची इंसान है, ये याद रखो. अच्छा, तो मींस लेसर कुछ भी पैसा नहीं छोड़ता है. जीआरबी सिर्फ कंसिडर करेगा लेसी, यूजीआरबी कंसिडर करेगा लेसर. लेसी मतलब बोथ कंसिडर करेगा, जीआरबी प्लस यूजीआरबी. तो सर लेसर के लिए वो लीज रेंटल इनटू लीज टर्म प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी है ना? हाँ जी. ओके सर, यही डाउट था मेरे को. ठीक है. यस. चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लीजेस नाउ. Operating lease and finance lease. There are two types of leases. Operating lease is nothing but it does not transfer the substantially all the risk and rewards. Okay, so all risk and rewards are not transferred. But in case of finance lease, all risk and rewards are transferred to lessee. Okay, so operating lease में
Risk and rewards. Now, what is risk and rewards? See, when you are using someone's asset, for example, suppose Aditya Sinha ji has taken some asset from his friend, and if accident meets, example, so Aditya, who is going to bear that cost? Whatever the servicing cost, who will bear? Yes, Aditya. सर माय फ्रेंड. माय फ्रेंड, अरे बाप रे, एक्सीडेंट आपने किया और आपका फ्रेंड अच्छा. वो गाड़ी का जो ये भरेगा? नो सर, आई विल बेयर दैट. हाँ, तो इन सेम केस, okay, in same case, so if lessee is taking that risk of rectification, then that will be called as finance risk. Okay. For example, Aditya, you have taken some premises on rent, example. Sir. Now there is some leakage problem. So who is going to bear that leakage cost? You Sir. are going to take, you are a tenant. So who is going to take that cost, bear that cost? Sir, the owner. Owner, landlord will bear that cost. So beta, here it is the operating lease. Here risks are not transferred. Risk is ultimately with The owner. owner of that asset. So it is called as operating lease. Yes, sir. Got the concept? Yes, sir. And in case of finance lease, who will bear that cost? The tenant. Tenant. So suppose if tenant has all responsibilities to bear that cost, then it is a finance lease. Okay, so understood the definition of risk and rewards? Yes, sir. Rewards means what, beta? Rewards means suppose if that asset is now rare asset, and now suddenly lessor realize that now that asset I will sell it in the market and I will get some money. So that rewards are also with lessor. Lessor. So that is the operating lease. And if that risk rewards are also to less, if rewards are considered by lessee, then it will be finance lease. Okay. So whatever benefits or whatever risk are with lessor, then it will be operating lease. If it is with lessee, then it will be finance lease. So what are the indicators, sir? Indicators are, Hardik, in lease transaction, income tax, don't think from the income tax point of view, because here I won't say कि it is from income tax point of view. इधर हम लोग accounts point of view से ही समझ लेंगे इसको. What are the conditions? क्योंकि इनकम टैक्स में थोड़ा अलग होता है. इनकम टैक्स का ऑफिस आपको फैकल्टी विल टेल, आई थिंक इन सीए फाइनल ही विल टेल यू लीज में क्या होता है. आई डोंट थिंक यू हैव इट इन इंटरमीडिएट लीज ट्रांजैक्शंस. The lessor transfers ownership of the asset to the lessee at the end of the lease terms. तो जो भी लीज टर्म है उसके एंड में भाई साहब एसेट लेसी को दे देने का. ओनरशिप ट्रांसफर्ड आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज लीज टर्म ऑफ 10 years, after 10 years lessee will get that rights. So it's a finance lease, pure finance lease. Second one, the lessee has option. ये in exam they may ask you this question for 4 marks. What are the indicators of finance lease? Favorite question. मेरे टाइम पे तो बहुत आता था ये. अभी institute ask you some practical questions. हाँ, but when I was studying this year course, this was the favorite question. 4 marks. What are the indicators of finance lease? Rights are with lessee. Ownership is also with lessee. Yes, Lahari ji, you're correct.
The lessee has the option to purchase the asset at price lower than the fair value. So market price after 10 years is 1 lakh. But lessee got that asset at 20,000. Why? Because lessor knows he already paid me finance lease. He already paid me a lease where I already covered my asset cost. Asset cost I already covered. So extra is giving that 20,000 rupees is the additional amount that I received from him. So वो लालची नहीं बन रहा है यहाँ पे उसने आपको ले ले एसेट भाई इज वन ऑफ द इंडिकेटर तेरी छे तू ही ले ले ओके तो वो दे दिया एसेट वो फाइनेंस लीज हो जाएगा lease term is for the major part of the economic life. See the key words. Major part means out of 10 years. Economic life. जब तक पैसा भाई पैसों का खेल है पूरा 10 साल इकोनॉमिक लाइफ है यूजफुल लाइफ डोंट कंसिडर 10 साल में से 8 साल लेसी के पास ही था एसेट मेजर इकोनॉमिक लाइफ 90% you consider 90%. You won't understand this. I will explain it at the time of solving problem. Present value of minimum lease payment, almost it covers the fair value of the lease asset. अब ये क्या होता है? We will see it in the examples. And the lease asset is of specialized nature. Oh, ho, ho. So lessee has only use. If you are going in the market, no one will take that asset. It is according to the specification which are given by the lessee. तो बेटा that is the one of the indicator. So 5 indicators. चलो याद कर लो 5 indicators. Yes, and raise your hand. I don't want exactly in same English, beta. You can like the lessor transfers ownership at the end to the lessee. Second one, lessee has the option to purchase it at very lower price than the fair value in the market. Repurchase, purchase at the time of end of the contract. Then beta lease terms is the major economic life. At the inception means when you start the recording the asset, okay, present value of the minimum lease payment is almost equals to fair value of the asset. Substantially matlab 90% or more. And specialized nature that he will only use the asset. I don't want exactly same language. ठीक है आप अपने भाषा में बोलिए कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में भी बता सकते हो इंग्लिश में भी बता सकते हो सो यस साई चरण यस बेटा हाँ जी बोलिए Good morning, sir. The indicators of finance lease are the first, the major economic life is rests with the leasing. Okay. And the second case, he is the only user of my leasing product. But no other one is no other. It was made specific for the specific leasing. Okay, for him. Acha. And the rental value, minimum lease payments which are getting from the lessee is almost equal to the fair value of the leased asset. Very good, huh? Repurchase option. A repurchase option, and the lessee was entitled with the option of purchasing at the end of the lease. When End of the lease terms ends, he will purchase at very low price than the fair value. Low price than fair value. And at the end, ownership is transferred to him. These are some indicators. Yes. Yes. Very good. Anil Kumar ji. Good morning, sir. Good morning. बोलिए. Yes, yes. Sir, indicators, 5 indicators, sir. First is the lessee transfers ownership at the end of the contract, at the end of the lease term. Second is the lessee has the lessee can transfer the ownership to him at the end of the lease term. यही तो बताया ना आपने फिर पहला. Okay, sir. The lessee has option to purchase the asset at lower than the fair value. Purchase lower than the fair value of the asset at that present market value. Correct. आगे. Third is the
the major economic life of the asset is used by the lessee. Very good. While even if he is not the ownership is not with lessee, but he is using the major economic life of the asset. ठीक है आगे. Fourth, at the inception of lease, Slide के लिखो. At the inception of the lease. minimum lease payments amounts is substantially lesser than the fair value of the leased asset. And Fifth lease is the asset. leased asset is a specialized in nature. Only the lessee can use of it. Others Okay. they may not be use the asset. Correct. Specialized nature means it is according to the specifications which are given by the lessee. So remember, these asset is specifically manufactured or constructed by the suggestions of the lessee, and lessor is only the financer. Got the concept? Fourth Yes, point, sir. beta Tambeshwari ji, you won't understand. Yes. Thank you, Anil ji. You explained it very well. Yes. Tambeshwari ji, you won't understand it now. We are going to see the calculations, then only you will understand it. Fair value and this. Accounting treatment in the books of lessee. Now, initial recognition, asset account debit, because he is going to record the asset, no? Lower of. Now, what is the lower of? So, this is the recognition criteria. Fair value and present value of minimum lease payment. You are aware about the concept of minimum lease payment. Minimum lease payment is nothing but it's a lease rental plus GRV, asset account debit to lessor. I want entries. Everyone will write these entries somewhere. And beta, at the after understanding entries, you are going to explain me. So at what value you are going to record the asset? Lower of fair value or present value of मिनिमम लीज पेमेंट. ये याद रखना. मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, मतलब याद रखना है. You have to recall this. Present value of minimum lease payment. So what is the minimum lease payment? So lessee. Lessee means lease rental plus GRV is called as total lease payment, minimum lease payment. उसका present value of that. So discounting, after discounting. Impairment में we already done with discounting. FM में you already done with the discounting part. Whichever is lower, so that will be recorded as an asset. Video stopped. Why? मनीष जी वीडियो स्टॉप हुआ है क्या मेरा? मनीष जी चल रहा है ना अच्छे से? यस. अच्छा. ओके. So asset account debit to lessor. Now this is initially, means first time. Now beta, after 1 year, after subsequent recognition, depreciation, because asset is recorded by you, means depreciation will be recorded to accumulated depreciation or to asset. Then finance charges to lessor. This is the interest amount. Interest is my expenditure as a debit balance, and we have to pay it to lessor. So lessor is my creditor. Lessor is my creditor. Creditor को credit balance. This is a due entry. Interest pay करना है. And when installment is paid, then lessor becomes receiver to bank. This is the installment amount. Principal plus interest. Khatam. Entries are over. Asset account debit to lessor. Depreciation account debit to accumulated depreciation. Finance charges account debit to lessor, and lessor account debit to bank. अरे भाई खत्म हो गया भाई, कुछ है ही नहीं इसमें. 4 entries है. Who is going to explain 4 entries? Yes, रश्मि जी फटाफट बोलिए. रचना को बोलने दो आज. हाँ रचना मैडम बोलिए.
Good morning, sir. In initial recognition, asset account debit to lesser account, amount lower of fair value or PD of MLP, which are lower. Subsequent recognition, depreciation account debit to accumulation depreciation. Finance charges account to lesser. Finance charges is only interest, and lesser account to bank account. This is principal plus interest. Very good. Very good. Yes. Another student, beta. Isha Maheshwari. अरे वाह. Now other students are also raising hand. नहीं तो वही घिसे पीटे स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं. बाकी स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है रे? अभी कितने दिन हो गए? डरना क्या है उसमें? बिंदास बोलने का ना, बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आप लोगों को ये समझ में नहीं आता. व्हाई वी आर रनिंग क्लासेस ऑन जूम? कॉन्फिडेंस कब पड़ेगा आप लोगों का? डायरेक्टली एग्जाम में जाने वाले हो क्या? भाई साहब, कॉन्फिडेंस है ना, जो लोग बोलते हैं उन्हीं का बढ़ता है. और ये जूम क्लासेस वी आर रनिंग फॉर ओनली दिस कम्युनिकेशन के लिए. Otherwise, YouTube lectures we already run in the last session. You are the luckiest batch which you can interact with your faculty. It's the best part of our ICAI classes. Yes, Isha ji. Good morning, बोले. sir. In initial recognition, asset account debit to lesser account, amount is lower of fair value or present value of MLP. In subsequent recognition, depreciation account debit to depreciation account and finance charges account debit to lesser account in interest and lesser account to bank account interest plus principal. Very good, madam. Very good. ठीक है. Yes. Now everyone understood it. चलिए अभी हम लोग we are going to solve one question जो मैं ब्रेक में जाने के पहले आपको देके जा रहा हूँ. Now you have to do this question, बेटा. You read this question. I am giving you 20 minutes. Okay. जितना समझ में आता है उतना कीजिए from study mat. Now here, have you done with your investment decision chapter in FM? Investment decision? No, not yet. It's going on. Have you done with the internal rate of return concept? Internal rate of return? How to calculate it? In FM, IRR, yes. IRR done, no? हाँ ठीक है. यदि IRR हुआ रहेगा तो I will explain it, don't worry. और ब्रेक में जाने के पहले आप लोगों को मैं एक सम देके जाता हूँ. हाँ जी, ये लीजिए. ये आ गया आपका सम. एग्जाम्पल 1. कंप्लीट इट. विल कम बैक विथ फ्रेश एनर्जी. चलो थोड़ा सा चाय पी के आता हूं मैं. सो 8:50 को हम लोग मिलेंगे. 5 minutes फॉर यूर एक्सरसाइज रीडिंग दिस क्वेश्चन. 5 to 10 minutes. 10 minutes का आप भी ब्रेक लीजिए. 10 minutes में कंप्लीट हो जाएगा. इफ यू आर अवेयर अबाउट दी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. IRR. ठीक है. चलो सो विल मेट आफ्टर ब्रेक. 8:50 को मैं आता हूं. मनीष जी ब्रेक ले लीजिए. Done.
यस बच्चा देखो, एग्जाम्पल 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व एनुअल लीज रेंटल. लेट्स स्टार्ट. Is 50,000 you are getting it at the end of each year. So tell me 1-5, you are getting 50,000. I will show you the presentation. Don't worry. Guaranteed residual value. Now see, from the point of view of lessor, okay, we will see UGRV also. So at the year end 5th, we are getting 25,000 guaranteed residual value and 15,000. 40,000 is the amount we are getting at the end of 5th year. Correct? Eh? Now here we ended with the question. Fair value rupees 2 lakhs. And they are asking you to calculate discounting factor. Yes, जिसको बोलते हैं guess rate. You have to find out such a guess rate where if you calculate present value by that guess rate, it will be rupees 2 lakhs. See, these are the future values. 50,000, 40,000, 50,000 you are getting at the end of first year, then second year, third year, fourth year, fifth year. And at the end of the 5th year, you are getting 40,000. So beta, we have to guess something. Yes, can you tell me, any one of you, how to consider first guess rate? How to consider first guess rate? Yes, any one of you. Raise your hand. I want to see. Yes, beta Hardik. कैसे गेस करते रे बेटा? गेस कैसे करते हैं? Good morning, sir. Sir, Good sir, usually it is better to guess in the multiple of 5. So on the basis of that, we can guess any rate. No, my dear. नहीं पता आपको ये? नहीं, sir. ऋषिता, yes बेटा. So we always assume 10% for ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं तो आपको ये इतना थोड़ी है. 10% किसने बोला ये ऋषिता आपको? गलत. दीपक, yes बेटा. Sir, the initial, the PV, the discounting factor is always on trial and error basis. However, initially we consider an interest rate which is about the about 10 to 15% as the initial base, and based on that we'll extrapolate. No बेटा, रहने दीजिए. No one has given me a satisfactory answer. I will give you. See, what is the total amount? I will tell you how to guess the rate. Near about, not exact. Yes. कौन था अपना? हार्दिक, raise your hand बेटा. Tell me बेटा Hardik. Yes, sir. What is the total inflow that you are getting? Sir, total inflow, sir, it is coming to, sir, for the MLP and UGRV. टोटल कितना रे बेटा टोटल? तो आराम से बैठा क्या रहता है? मुझे समझ में नहीं आता. 3,75,000, sir. 50,000 इंटू 5, 2,50,000 प्लस Plus 1 lakh. 40,000, 2,90,000 इज द टोटल इनफ्लो. आप क्या मतलब आराम से बैठे रहते हो? मैं एक सेकंड आपको नहीं बोल रहा हूँ. आप इधर आराम करने के लिए आए तो गद्दा लेके बैठो. ये करो ना कैलकुलेट फटाफट.
minus 2 lakhs. कितना हुआ ये? 90,000 sir. 90,000 over कितना Yes sir. years? Sir, 5 years. 5 years. So what is the total amount that you are receiving? Sir, 18,000. 18,000. 18,000 on how much? 2 lakhs rupees per annum. मोटा मोटी बोलते हैं इसको. Sir, So what do you have 9%. to do? Total inflows minus outflows. So you will get the total 90,000, and that is your per annum is 18,000. So 2 lakh pay 18,000 means 9%. Yes sir. Okay. So this is the guess rate. This is my inflows, total inflows. And this is my total. I want present value. So I will call it as total outflow in simple language. So 90,000 divided by 5, I will get 18,000. That is 2 lakhs pay 18%. On 2 lakhs 18% means 9% is a guess rate. Understood क्या करना है? Yes sir. ये आपको FM में दिया गया है. So 10% is my guess. It's not like कि 5% के multiples में. ऐसा नहीं होता है भाई. कभी कभी 80% भी होता है. Okay sir. So मोटा मोटी calculate करने का. Okay. Okay sir. Now, what is the discounting factor of 1, 2, 3, 4, 5? How Sir, to calculate this? Sir, Pankaj PV bhai. factor उसको m plus कर दोगे सर तो सबका add up होकर sum up आ जाएगा 3.7906. Can you explain me the meaning of 1 divided by 1.10, 0.9091? Sir, 1 rupee value. 0.8264, 0.7513. What it means? Sir, rupee 1 value today after 1 year is equal to 0.9. Rupee value after 2 years is equal to 0.282. Wait. What is the meaning? Sir, I have to tell. What is the meaning, beta? Sir, मैं बताऊं? या हाँ बताओ ना. Yes sir, rupee 1 value after 1 year is equal to 0.901. Rupee 1 value after 2 years is equal to 0.8264. See, you are talking about after 1 year 1 rupee value. After 1 rupee ka value, yeah, 1 rupee you will get after 1 year, and today's value is 0.9091. Today's value. You are talking about ki after 1 year this value is there. No sir, today's value of 1 rupee. Yes sir, today's value, if I am getting 1 rupee at the end of the first year. Yes sir. So today's value of 1 rupee at the rate of 10% is 0.9091. Yes, I'm sir. getting 1 rupee at the end of the second year. So students who are weak in FM, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा. इसका मीनिंग क्या है? You are getting 1 rupee every year for next 4 years. How much? 1 rupee. And these are years. These are my inflows. What is the present value? Is the diagram. And this is called as, if you 1 rupee is getting every year, so I will consider annuity. I will consider annuity. Okay. इसका simple formula 1 divided by 1.10 is raised to 1. 1 rupee I will get it after 2 years. So 2 raised to 2. 1 rupee I am getting after 3 years. So raised to 3, 4, 5. And today's value, additions of this, and therefore we are using the function memory plus over here because we want this addition. So how to calculate it? So देखो 1 divided by 1.10, पहले memory को 0 कर दो. Your memory M button is not there, but and use this type of calculation only. So 1 divided by 1.1 is equal to M plus, is equal to M plus 2 times, is equal to M plus 3 times, is equal to M plus 4 times, is equal to M plus 5 times. Memory recall. You are getting the answer 3.7907. Memory recall मतलब MRC का बटन. पहले M plus का बटन, then memory recall का बटन. I am getting the answer 3.7908. And now 1 divided by 1.101 again, once again. Now don't use, because 5th year you want, so don't use memory plus function.
Sir, 1, 2, 3, 4, 5. So it is 0.6209. One of the student is answering ki sir 9%, beta it is a guess rate. And guess rate should be on the higher side, 9% ke upar. Okay, and therefore I consider in the multiples of 5, 10%. So Lowry ji, this is the logic I used it over here. 9% answer aa raha tha, but I used in the multiple of 5, and that's why I use the 10% as a guess rate. So what is the multiplication, beta? 50,000 into 3.7908 memory plus. पहले का memory निकाल दो बेटा. 40,000 into 0.6209 memory plus. So I am getting the answer 2,14,376 is the present value at the rate of 10%. But beta, how much amount I want over here? 2 lakhs. तो I want to, yes बेटा, yes हार्दिक आगे बोलिए, अभी क्या करना पड़ेगा? सर इसको हमको 2 गैस रेट्स लेना है और हमको इस तरीके से लेना है कि वो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हमको इसलिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि उनके बीच आंसर 0 नहीं होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। हाँ, तो अभी 2 लाख करेंगे तो इसमें से 14,376 वैल्यू आएगा, ये पॉजिटिव है। तो इसलिए ये पॉजिटिव है, तो दिस मीन्स दैट हमको अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा अभी और। तो सर मैंने फिर 15% से किया था। 15% से, ठीक है। So now we'll do calculation of Hardik only. ठीक है, 15% से again take on calci. 1 divided by 1.15 is equal to m plus, 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 is equal to m plus for 5 times. So you are getting the answer 3.3522. And 1 divided by 1.15. 1, 2, 3, 4, 5. 0.4972. Okay. I will multiply again. Memory 0 kar do. There should not be anything in memory. 50,000 into 3.3522. 40,000 into 0.4972 memory plus. Memory recall. कितना आ रहा है हार्दिक जी? सर 1,87,479. 498. If you are going with my digits, then 498. हाँ, now what to do? सर उसके बाद सर फॉर्मूला से या लॉजिक से? सर फॉर्मूला से जाएं या लॉजिक से, क्योंकि दो लॉजिक तरीके। से चाहिए। आई ऑलवेज लाइक लॉजिक। सर उसमें सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भी कह सकते हैं उसको। उसमें सर 10% से 15% तक कितना बढ़ रहा है हमारा? 5% बढ़ रहा है। So you are keeping 10% as base. Yes sir, keeping 10% as base. So 10% से 15% तक हमारा So 10% plus something. If 5% से discounting factor is increase, yes sir, your तो answer is decreased by negative 26,887. 26,878. Yes sir. And And you sir, want to reduce, you want answer? sir we have to reduce it by 14,376. तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.67% आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो 12.67% आ जाएगा। 2.67. यस, इंक्रीज है ये। 12.67 is the correct answer. Yes, sir. my dear. Institute ने कितना लिया है देखो, 10 and 14. So their answer is 12.6. It's okay. If you are not getting correct exact answer, it's okay. 67. जितना ये gap कम रहेगा, उतना accuracy of the answer is getting increase. Accuracy, it's okay. If you are getting 12.67 and institute is getting 12.6, it's okay beta, because this is a guess rate and guess rate is always beta assume. Okay, so everyone is clear with the concept. Anyone has difficulty in understanding IRR when we are finding out this rate? Why we are finding out this rate? Because we want to consider, what we have to consider? Guess rate. Why we are calculating guess rate? Because we have to divide our principal amount
our rental amount 50,000 and 40,000 in two parts, interest separately and Principal separate. principal separately. And that's why we need some discounting factor, interest rate. And this interest rate, if it is not given in the question, then we will find out. And how to find out it? By using trial and error method. This is called as trial and error method. In financial management, this word is called as internal rate of return. It is one of the technique. Hardik, you are very sincere. Just want to ask you one thing. Just checking your knowledge, beta. Don't worry. Means I just want to see how much depth study you are doing. Yes, sir. Hardik, if there are multiple methods in capital budgeting, Yes, sir. so can you tell me when to use IRR method? Sir, And what is the problem with IRR method? sir, I have not read the theory. Just, sir, I don't know about it. I don't know the answer of it, sir. Any one of you? Hardik? When we don't know exact discount factors. That is not a method, no? There are multiple methods. So in multiple methods, which method you are going to opt is the first question to yourself. Logical question. Sir, if we have to opt any one method, then I will go for NPV. Why? Sir, because sir, usually present value is calculated, and it is based on cash flows. So better logics are not clear. You are just doing questions. Don't take it personally, but no, ultimately we are doing these things for logical purpose. yes, Okay. sir. And see, if you are not clear with the logic now, then solving is a secondary part. In CA final, you are going to face problems if your logics are not clear. See, and you are solving it before 2 days only you solved it, no? Yes, sir. तो फिर 2 दिन में भूल गए तो बेटा 15-20 दिन के बाद तो कुछ भी नहीं, तो 3 महीने के बाद तो बेकार हो जाएगा पूरा, फिर सिर्फ सॉल्व करते रह जाओगे. See, I am telling you in one line, net present value method gives you present value of inflow minus present value of outflow. Okay. The problem is that here we consider discounting factor compared to bank rate or opportunity rate. But internal rate of return calculates its own rate. You're getting my point? Yes, sir. I'm telling you the logic of this because your chapter is going on. That's why I'm telling you this logic. Present value of inflow and present value of outflow, you are using the rate which is our opportunity rate. Means suppose मैं business करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मिनिमम 12% तो पैसा मिलना चाहिए without taking risk or without tension. If I'm getting lower than the 12%, then I should not do business. Bank में I'm getting 7%, but I'm taking a risk, therefore 5% risk premium. Okay, you're Yes, getting sir. my point, बेटा हार्दिक? Yes, sir. तो 12% से ऊपर मेरा आंसर, यदि 12% से आई एम डूइंग डिस्काउंटिंग and I'm getting the positive factor, positive NPV, then I will select the project. Yes, sir. If I'm getting the negative percentage, I won't select the project. This is I compare with opportunity rate. Okay. Yes. And second one, in IRR itself, IRR gives you calculation of rate. Suppose 18%. IRR is my suppose 18%. I calculated and I got 18%. Then I will compare with my opportunity rate. That is only 12%. So I will go with the project because it is giving me higher rate of return, because IRR gives you project return and NPV gives you opportunity return, positive or negative. Okay, sir. This is the basic difference. But the
problem of IRR. If I go by NPV method versus IRR method, I have selection criteria. Should I follow NPV or should I follow IRR? When I select the project, how to compare it? And in that case, if I go with the IRR, the problem is that of IRR. IRR assumes the reinvestment rate is the same rate. That is 18%. That is the reinvestment rate. कुछ याद आया कि आपको ये याद आना चाहिए था. 18% the same rate, and it is not possible in business because your competitor will come. Okay, if you are getting the margin 18% in the first, circle in your working capital cycle, if you are getting 18% return in that cycle, and whenever you are investing again, the same cycle won't give you 18% return. That because these are the long-term projects. So it is not possible that you will get the same return, and therefore we normally follow NPV method. Okay. And if there is a difference, if profitability index and NPV, when you will select the project, if you do not have any money constraint ही नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो you will go with the NPV method. But suppose if you have money constraint, then you will go with profitability index, which will give you returns in times. How many times you are getting the investment? So suppose 1.1. So if you are investing 1 rupee, you are getting 1.1 rupee. Okay, so that is the PI calculation. PI will give you answer in times. And what is the benefit of that? If you have money constraint, you can easily compare it. But if you do not have money constraint, money is not the problem. You can invest as much you want. So you will go with the NPV method. Okay, sir. So this is how every method has its own use. Payback period, if your project is not, if it is an innovative obsolescence problem, that technologically it may get outdated. So you will go with the simple payback or discounted payback. You want your money return fast. Okay. So that is the payback period you will select. And this is how. And suppose you do not want to come with the calculation part because you do not have separate department, you go with the accounting rate of return. So you will not do discounting. You will not calculate cash flows. You will consider net profit. Okay. और ये हर मेथड का अपना अपना फायदा या नुकसान है बेटा. ओके, बस हो गया टॉपिक, खत्म हो गया, इतना ही है कैपिटल बजटिंग. सिर्फ आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, यू आर डूइंग हार्डवर्क, पर हार्डवर्क को तब सक्सेस मिलेगा जब यू आर डूइंग इट इन द लॉजिकल वे. सी नाउ इफ आई आस्क यू एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू कैन टेल मी द लॉजिक. सर AS2 का लॉजिक क्या था? मैं रोज आने के बाद वही रिवाइज करवा के लेता हूँ. कॉस्ट और NRV, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में जाना ही नहीं है, NRV जाना है. यहाँ पे इंपेयरमेंट होगा ही नहीं क्योंकि 1 साल में ही आने वाला है. वही इंपेयरमेंट किसका होगा? तो S10 का होगा. नाउ यू कैन कोरिलेट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ ईच अदर, और वो बहुत जरूरी है फॉर एनी सब्जेक्ट. आया समझ में कि व्हाई वी आर डूइंग इट? यू शुड नो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग कि ये मैं कैपिटल बजटिंग करता हूं. If I ask you why you are calculating operating leverage and financial leverage, you should know the answer कि ये मैं करना क्यों चाहता हूं. I don't want formula. If I ask you what is the difference between OL and DOL, you will tell me the formula, but how you use it in the practical life is more important. If I go with the cost of capital, you can connect cost of capital with capital structure, working capital, cycles. So ये कनेक्शन बहुत जरूरी है हर टॉपिक का एक दूसरे के साथ. तो वो पढ़िए हार्दिक, मतलब आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट इन दैट, बट एक स्मार्ट वे से भी पढ़ाई कीजिए कि हर चीज के पीछे खुद को पूछिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं करके. ठीक है? हाँ जी सर. यस, वेरी गुड. चलिए, so very good beta, you know the calculation part, but I get disappointed because if I'm asking you which method has to be selected, it is not my question, because in accounts you don't have NPV versus IRR versus PI. But in financial management, you should know all these things. Why? And I don't want to enter with any, controversial points ki, sir, yes, it is only I'm giving the sir ने बताया भी होगा, but you should know the way कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. और नहीं भी बताया, some points मेरे से भी रह जाएंगे, but study material में सब कुछ दिया हुआ है. तो whenever you are reading it, तो thoroughly read कीजिए कि ये सर क्यों अभी कर रहे हैं. रीड किया नहीं था मैंने, मतलब अभी उस दिन ही खत्म हुआ था, उसके बाद मतलब सैटरडे खत्म हुआ था, तो अभी रीड करना था. अब रीड करके मैं सर लॉजिक समझ लूंगा सर.
ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। लॉजिक समझ गए ना बेटा आपको? यस सर, अब समझ में आ गया सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर वगैरह ठीक मी रईस पण आजे नाही काले करू आपण फायनल हाँ हाँ ठीक है, चलिए। So everyone, beta, do you have any question related to discounting factor? If you do not understand any concept of discounting factor, you can ask me over here. क्योंकि this is only a chapter where I will clear your concept of discounting factor. भावना जी बोल रही थी कि बेटा हिंदी में बता दीजिए सर एक बार तो why we calculated two guess rates. Please summarize the solution. Lahari ji, why we calculated two guess rate? Because without this guess rate, we cannot see. We do not have any Excel function over here. Okay, in Excel we can easily calculate guess rate of this transaction without taking discounting factors. But mathematically, when we calculate, we want rate of discounting factor, this 12%, this interest rate. So I have to go by the IRR method में guess rate only. We do not have any other option. We will do it on the trial and error basis. First we will take, why the name is trial and error? Because first I selected the rate 10%, but I have seen that 10% I'm not getting the rate 2,14,376. I want 2 lakh rupees over there. I'm getting the rate 2,14,376. That's why beta, I have to now change the discount factor. Why I change the discounting factor? Because I need in answer 2 lakhs rupees. So for getting 2 lakhs rupees, I have to, I want to decrease my present value. And if I want to decrease my present value, then beta discounting factor, when you update the discounting factor on the higher side, then only you will get the lower answer. Why? Because one pizza, if I divide by 2 persons, so size of the pizza will be higher. And if I divide by 3 persons, so 3 persons, if I take higher denominator, then beta my answer will be on the lower side. And this is logic of why we are taking the, if discounting factor is sorry, if you are getting 2,14,376 and if you want 2 lakh rupees, so I will take the higher discounting factor. Logic is very simple. One pizza shared by 2 persons is always having the greater size as compared to one pizza shared by the 3 people. So discounting factor जितना ज्यादा होगा उतना आंसर कम होगा. जैसे पिज्जा का एग्जांपल याद रखना. दिस इज हाउ यू टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट. देखो मेरा भी मैथ्स बहुत वीक है, बट अल्टीमेटली मैं मैथ्स में कुछ फंडाज याद करता हूं एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स. तो 10% का 15% हो चुका है, तो माय आंसर इज 187,498 एंड आई कैन नॉट प्ले इन दिस. ओके, तो अभी आई विल यूज द इंटरपोलेशन रूल. द वर्ड इंटरपोलेशन इज नथिंग बट इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. In simple language, it is a cross multiplication. Okay, if I increase 10% to 15%, that is 5% increase, will give me the answer, shorter answer, means lesser answer, 26,878. And at the same time, I want answer 2 lakhs. तो मुझे कितने से नीचे आना है? 14,376. So I will do the cross multiplication. 14,376 into 5 divided by 26,878. And I am getting the answer 2.67. 10% में उतना ऐड कर दिया. तो it is called as implicit rate in account. In accounts, it is implicit rate of return. In financial management, it is called as internal rate of return. Got the difference? This is the conceptual clarity of IRR. In NPV, different type of calculation. In PI, we will keep the calculation same. Instead of minus, we will divide it. So we'll get the answer in times. And in NPV, we will get the answer in rupees. Sir, shall we use this method in exam? Yes, better Riddhi. Nothing worry in that method. See, this is the exam presentation. I will show you the exam presentation also. Don't worry. ये थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन है, आप लोग इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो. This question is example 1 is internal rate of return, that is the IRR. Yes, you can calculate in the same way. 12.67%. This is the presentation which you can do it in the exam. You can show it over here. This is the 21906.
and this is 5%. You can show like this by pencil. Yes, Rosalind जी. सर वो लास्ट वाला जो आपने कैलकुलेशन किया 5% का, उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. क्या कंफ्यूजन हुआ? लास्ट में जो 5% इंक्रीज इन 5%, जो प्लस माइनस का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया. 10% से कितने परसेंट पे गए आप? 10% से हम लोग 2,14,000 पे गए. और इधर मैंने देखा 15 से किया मैंने. आप नहीं नहीं 14 से सर, क्यों? 10% से हम लोग 15% में गए, 5% तो इंक्रीज किए. आप 14 पे जा रहे हो, इधर मैं 15 से सिखा रहा नहीं नहीं हूँ. सर, 15%. तो 5% से इंक्रीज किया. और 10 का 15 मतलब 5% ना रोजालिन जी? यस सर, यस सर. हाँ, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितने से कम हुआ? 15 माइनस 187. देखो ना, ये डायग्राम में दिया ना मैंने. यस यस सर, कितने से? 2,21,906. तो उससे कम हुआ, समझा? यस. और मुझे आंसर कितना चाहिए था? 2 लाख. 2 lakhs. मतलब मुझे आंसर कितने से कम करना है? 14,376. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 14,376 इंटू 5 डिवाइड बाय 21,906, तो मुझे नीचे का आंसर आएगा. सर सिंपल है कि नहीं? स्कूल में पढ़ाते ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यस. हाँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा फिर? 5% से बढ़ाया, कम बढ़ाया तो 21,906 से कम होगा. 14,376 से कम करना है तो आंसर 2.67 आएगा. यस. इजी. यस सर. और कोई डिफिकल्टी, शक, सवाल इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर? एवरीवन इज क्लियर विद द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? Because this calculation is not actually my part of accounts. This is covered in the financial management, but some students may find this difficult. तो उनको मैंने लॉजिक बता दिया. What is exactly the logic is? हाँ जी, तांबेश्वरी जी बताइए. यस सर. सर हमने जो गैस रेट के अंदर 18,000 के बाद में क्या हमने 2,000 का डिवाइड किया है? क्या? गैस रेट. हाँ. हाँ सर, वही पूछना था सर, वो 9% कैसे आया? कौन सा? गैस रेट सर. 9%. 18,000 रुपीज आपका डिफरेंस आया था. यस सर. डिवाइड बाय 2 lakhs आपने इन्वेस्ट किया था. इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, सॉरी, अमाउंट पर एनम डिवाइड बाय 2 lakhs. यस सर, यस सर. हाँ, यही कंफ्यूजन और था सर. परसेंटेज का साइन दबा दीजिए, देखो 9% आएगा. यस सर, आया सर. नहीं तो एक ऐसा भी कर सकते हो विदाउट कैलसीबी. 18,000 2 लाख पे, तो 1 लाख पे 9,000, 1 लाख पे 9,000 बोले तो 9% रिटर्न. ओके सर, हाँ. थैंक यू. यस. एनी अदर डिफिकल्टी? कुछ भी सिली मिस्टेक सिली रहने दीजिए. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, बिकॉज इट इज अ मैथमेटिक्स. और मैथ्स बोला तो मैं डरता था, तो बट ऑब्वियस आपसे भी मुझे उम्मीद नहीं है तुरंत आपको आएगा करके. एनीवन हैज डिफिकल्टी? अरे वाह, ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. वाह रे वाह, क्या बात है. 21,906 is the wrong answer or what? Wrong है क्या? 214376 minus. Hmm. 26,878. Yes बेटा. Thank you. कौन थे ये महाशय? थैंक यू साई किरण. पर ये फैक्टर बराबर है क्या 15% से भैया? 3 4 5 3.522 15% से करेक्ट है ना? एंड 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4972 40,000. 50,000 इंटू 3.3522 मेमोरी प्लस 167,610 एंड 40,000 इंटू 0.4972. हाँ ठीक है, 19,880. ठीक है भैया. 26,187,498 बराबर है ना? गलत है? आप इतना क्यों सोच रहे हो? 27.
26,878. ठीक है. Explain the calculator trick after 50,000. Okay. 50,000. How to calculate this factor? Riddhi ji, take on calci. 1 divided by 1.15, 15% से is equal to m plus 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 when it is 1-5, because you are getting the same amount year after year. Okay, okay, okay. So here we will consider the discounting factor. 5% increase in the discounting factor is you are getting the answer. Yes. So understood better, Riddhi? And in 5th year, you won't consider is equal to m plus. You will simply press is equal to button for 5 times. When you are getting every year that 1 rupee, so is equal to m plus 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 is equal to m plus. The button you will consider. रिद्धि जी बोलिए जल्दी जल्दी. I do not have time बेटा. मैं आपके लिए इधर रुका हुआ हूँ. When you are calculating annuity, every year you are getting the amount is equal to m plus. If you are getting amount only at the end of the year 5, so you'll press only 1 divided by 1.10 or 15. Okay, is equal to is equal to is equal to is equal to is equal to. Yeah, I think FM में cover हो चुका है. चलो, I will move to next concept. In example 2, the same example from the angle of lessee we are going to calculate. So lessee we will don't consider 15,000. Okay, we won't consider 15,000. And rate is already given over there, 12.6. Rate is given. So here we have completed with the question part. And you are asked to calculate minimum lease payment. Calculation is very simple. Riddhi ji, 1-5, you are getting 50,000 every year. And in 5th year, don't consider UGRP because we are considered now present value of minimum lease payment in the books of lessee. So I will consider only and only 25,000, my dear. 25,000. So take on calci. 1 divided by 1.126. 1 divided by 1.126 is equal to m plus 1 time 2, 3, 4, 5. 5 का मैं इधर लिख देता हूँ 5525 and memory recall. Okay, so now I will multiply this and take a total. So calci पे directly आ सकता है 50,000 into 35518 memory plus 25,000 into 5525 memory plus memory recall 191,403. So here institute has considered rounded off figure 191,400. Asset is recorded at 191,400. Anyone has difficulty in this? Rosalind ji has difficulty, beta? Yes, Rosalind ji, any calculation that you are not getting? सर वो कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है मुझे कैलकुलेटर पे. कौन सा? वो अपने जो m प्लस करके क्या when I'm trying it is not coming. कौन सा कैल्सी है? कैसी सर नॉर्मल ही है. कौन सा नॉर्मल मतलब? आप जो यूज कर रहे वैसे वाला नाम रहेगा ना उसके ऊपर कुछ तो, ऑरपेट कैशियो का ही है सर. कैसियो खत्म मत करो. कैसियो होगा तो फेंक दो. मैंने पहले दिन पे बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसियो तो यूज ही मत करो. सर कौन सा ले फिर? नहीं हो रहा आप है. कोई भी लीजिए कैसियो छोड़ के. ये लीजिए सिटीजन लीजिए ऐसा वाला. सिटीजन बोल देना सर. इट्स अ बेस्ट कैल्सी. सिटीजन लीजिए, ऑरपेट लीजिए, पर कैसियो प्लीज मत यूज कीजिए क्योंकि कैसियो विल नॉट गिव द आंसर. कैसियो के फंक्शन ही अलग चलते हैं. आपको मैंने फर्स्ट डे पे बोला था, आपने वो तब सुना नहीं था आपने.
Maybe sir, I missed it that day. कैसियो का कैल्सी यूज मत कीजिए कभी भी, ध्यान में रखना। फिर भी एक बार ट्राई कीजिए, देखो मिल रहा है क्या। इफ नॉट गेटिंग तो, क्योंकि कैसियो में भी दो टाइप के कैल्सीज है, आपका दे रहा है क्या देखिए। कौन सा है कैसियो का? एमजे, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है सर इसमें। MJ12D उसका रहेगा ना कुछ तो उधर मैं टॉप शायद साइड पे। ट्राई कर रही हूँ और एक बार इसे। DJ12D 120D नहीं पता मुझे, पर कैसियो का यूज मत कीजिए। सी वन मोर टाइम, 1 डिवाइड बाय 1.126 is equal to m plus 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 एंड मेमोरी रिकॉल का बटन दबाइए 5 टाइम्स दबा के। कितना आ रहा है? 2.66 सर आ रहा है। कितना? 2.66। नहीं है। एक काम कीजिए, पहले मेमोरी रिकॉल का फंक्शन जो है ना, वो 2-3 बार दबा दीजिए। मेमोरी रिकॉल बोले तो ऐसा एक बटन है, हाँ मेमोरी हाँ सर। रिकॉल। हाँ, सर वो 2 बार दबा दीजिए। अभी आपका एम बटन किधर भी शो नहीं होना चाहिए कैल्सी पे। सर हुआ? सर हाँ, अभी आराम से मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रेस कीजिए। 1 डिवाइड बाय 1.126 इज इक्वल टू एम प्लस, ऐसा 5 टाइम्स प्रेस कीजिए। बोलिए इज इक्वल टू एम प्लस, बोलिए मतलब बोलते बोलते करिए भी। इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस, एंड फिर मेमोरी रिकॉल का बटन दबाइए। जीटी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर जीटी आई वोंट रिकमेंडेड। नहीं आ रहा है? नो सर। ठीक है, छोड़ दीजिए फिर वो नहीं यूज होगा। आप कुछ तो बटन गलत दबा रहे हो, पर कैसे यूज ही मत कीजिए, इट्स अ बेस्ट थिंग। सर हाँ ठीक है, चलिए। Yes, beta. I know Manvi, it is 403, but for sake of calculation, I have considered 3 rupees कम। मानवी 1 लाख के ट्रांजैक्शन में 3 रुपया कम दिया तो चलेगा ना बेटा? यस। MJ 120D कैल्सी, अरे बट कैसियो मत यूज कीजिए यार, टेंशन मत दीजिए ना। जो बोलते हो वो नहीं सुनते यार आप लोग, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हो। हाँ, so here we have completed with the calculation of present value. Okay, abhi why we are doing this all things? Logic is very simple. We have to divide principal amount and interest. Now see beta, year principal sum outstanding at the beginning, I will take interest. Now what is the interest rate beta? What we have calculated, Aditya Sinha? What is the interest rate I have calculated? हाँ जी बेटा। 35518। हाँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन है ना। अरे इंटरेस्ट रेट 12.61%। आदित्य अरे क्या कर रहे हो? Repayment and principal sum outstanding at the end. This picture will give me interest and principal amount separately. हाँ, so what is the first year beta Aditya? Principal sum outstanding at the beginning 191 400, correct? 400, yes sir. अरे interest rate 12.61 you Yes sir. calculated, no? Yes sir, yes sir. आप कौन सा आंसर बता रहे थे? सर मैं वो बता रहा था, जो हम लोग ने 3.5518 कैलकुलेट किया था, उसको अरे वो बोल तो रहा था। डिस्काउंटिंग फैक्टर वो थोड़ी लेते हैं। हाँ मैं उसको बोल रहा था। कुछ भी आप लेते हो भाई। क्या चल रहा है ये? हाँ, अभी 191 400 पे इंटरेस्ट बताओ, 12.61 से कितना आया? 191 400 इंटू 12.6, सॉरी 12.6 गिवन है उनका। हाँ 12.6 है। हाँ, कितना आया?
191 सर 400 पे 4615 अरे गलत चला गया हाँ सर 191400 into 12.61 12.6% का साइन दबाइए सर 461587 ही तो लगा रहा है मेरे में 191400 into 191 400 multiplied by 12.6%. Only you have to press that. 24116 Plus is equal to कीजिए plus is equal to Hmm. 215516.4 215516.4. So this is the total of this. Correct? yes sir And yes how sir much you have repaid? What is your installment amount? 50,000, no? yes sir हाँ, so 50,000 minus कीजिए 165516 165 516 5 165516 sir हाँ 0.4 something 0.46 छोड़ दीजिए. Now yes this sir at the end becomes at the beginning, beta. 165516 Correct? yes sir Into press 12.6%. Press into 12.6% 165 sign. 516 into 12.6% 20855 Plus is equal to plus is equal to 186371 minus 50,000. 1,36,371 Same figure. Now again you have to do it into 12.6%. 12.6%. Don't press this button directly. You can do it on the. Don't write again 136,371. It is there on Calci. Some points will be there. Directly Sir, that once figure you can consider. Every time you don't have to take 136,371. Same figure you will can go on, no? okay sir हाँ 17,183. Not getting you the same amount. yes sir I'm getting the same amount Plus is equal to minus 50,000. So you get the figure 103554 4. Now continue with the same figure. Do not press it again. Into 12.6%. 130 48. 47 yes sir so Plus is equal to. plus is वो equal क्यों चाहिए मुझे वो जिसमें मुझे नहीं इंटरेस्ट. Minus 50,000. minus 50,000 And see 66601 into 15% 9990. And in last year, beta, you are getting 75,000, no? 50,000 plus 25,000 GRV. ओके सर वो लास्ट वाला 15% एक बार 0.5 8391 कुछ तो आया रहेगा. 8392 करेक्ट है. हाँ But at the end you should get 75,000. So okay 6602 plus 15%. Sorry, मैं क्या कर रहा हूँ यार. 660 Into 12.6%. Minus 7 rupees का कुछ तो डिफरेंस आ रहा है. करेक्ट. सर 7 rupees आ रहा है 839 ना. डिस्काउंट सर वो फैक्टर 8391.852 हाँ तो वो अभी ये जो है ना प्लस इज इक्वल टू करके minus 75,000 कीजिए. आई थिंक 7 रुपया कुछ तो आ रहा है. 7 या 8 रुपीज. 75,000 यस सर 6.148 ऐसे आ रहा है मेरे में. सो वो आंसर को इधर हम लोग ये जीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो 75,66602. तो वी विल कंसिडर इंस्टेड ऑफ 8398 8392 के बदले में 8398. So we will do rounding off over here to keep it at 0. Yes, sir. Okay, because at the end your now installments are over. So your installment at the end should be 0, no? Yes, sir. तो आदित्य जी आपको फिर क्या करना पड़ेगा.
यहाँ पे 0 करने के लिए यहाँ पे 8398 लेना 8398 पड़ेगा. लेना पड़ेगा. Got the concept? Yes, sir. Now why we have done this calculation? Sir, 0 Why लाने we के have लिए. done this? All these things. ये क्यों किया हमने? Because I cannot record these as my expenses. This is my total expenditure, correct? Because I am the lessee. So what is my expenditure? 50,000 for 5 Sir, times 5 times. and 25,000 2,50,000. at the end. 2,75,000. 75,000. I should get the breakup. What is the principal amount of my 2,75,000? At the beginning? 191400. This is my principal. And what is my Yes, interest then? Remaining part 275 minus 191,400. 83,600. 600. And Yes, this sir. 83,600, I don't want directly expenditure. If I don't prepare this table, see the total of this interest. 24,116 plus 20,855 plus 171,83 plus 13,048 plus 8,398. What is the total? 83,600. And Yes, for sir. this bifurcation, we have done this calculation of interest repayment table. This is called as repayment schedule. So you will record your asset at this value. And this amount will be transferred every year P&L to profit account. and loss account. And this is your repayment amount. Means we have done this to calculate the principal amount and the interest Principal, rate no, of. no. This table will give you the principal table, principal amount. And this table will give you interest bifurcation. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Principal amount, present value calculation. And for interest bifurcation, we want this table. Okay, sir. Now what will be the entry? First, I will book the asset. I already taken this entry now. Asset to lessor. Asset Lessor is my account. asset. Lessor, I want to pay him. At what value? 191400. Whichever is lower, 191,400 or 2 lakhs, whichever is lower. Lower. This is at the beginning. Yes, Whatever the sir. depreciation, I will charge it on this asset. Okay, that is not given. Now, Sir, finance charges. interest amount. Interest is my expenditure. To lessor. हाँ? Okay, sir. 83,600 करेंगे बेटा? Interest, yes, Directly sir. 83,600 करेंगे first year में? Then what is the use of this table to prepare if I want to debit No, sir. interest First year में 83,600? 24,116 करेंगे. फिर क्या फायदा? ये बंदा बोल रहा इधर बैठा है, वो बोल रहा है 83,600. फिर क्यों किया हमने बाइफरकेशन? लॉजिक ही नहीं समझते भाई बोलने के पहले. 24,116. 83,600 is a total expenditure over 5 years. I will do first year का accounting, no? आप Yes, इंटरेस्ट sir. एक साथ ही इकट्ठा रिकॉर्ड करते हो क्या ईयर वाइज रिकॉर्ड करते हो? Yes, sir. कैसे रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट? इकट्ठा या ईयर वाइज? Year wise, sir. ईयर वाइज, कॉमन सेंस. ईयर वाइज P&L बनाना है हमें. एंड देन लेसोर को कितना पैसा दिया पहले साल में? 191400 plus 24,116. इतना पैसा दे दिया साथ में, रीपेमेंट इतना कर दिया एक ही साथ. और दिखा है ना ऊपर लिखा मैंने रीपेमेंट. Sir, व्हाट इज द 50,000. रीपेमेंट इन द फर्स्ट ईयर? 50,000, sir. कितनी गलतियां करोगे रे? मतलब कुछ दिमाग लगा के कीजिए ना. मैं इतना ही बोलता हूं. बुरा लगता है मुझे कि मैं इतना दे रहा हूं टेबल बाइफरकेट करके. स्टिल यू आर आंसरिंग 191,400 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. इतना थोड़ी हम लोग दे देंगे. फिर क्या, फिर इंस्टॉलमेंट का फायदा है? वी आर टेकिंग इंस्टॉलमेंट्स, नो? Yes, sir. सामने वाले से हम लोग इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं ना. ये 50,000. व्हाट इज दिस टेबल? इट इज सिंपल योर installment Bifurcation. table. This is my principal amount. It is my asset. This is my P&L of every year, P&L of every year, P&L of every year, P&L, P&L. 81,600 I cannot bifurcate in 1 year.
then I will repay this amount. 50,000 consists of some portion of principal amount. What is the principal amount of that? 24,116 4 minus 50,000. minus 50,000. You can check 50,000 minus 24,116 is 25. 50,000 में से 24,116 गया तो कितना बचा? 25,834. 25,884. करेक्ट. एंड 191,400 में से ये रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल माइनस करो, माइनस 191,400. यही मिल रहा है क्या प्रिंसिपल सम आउटस्टैंडिंग एट द एंड? यस सर. सो मेरे 50,000 में से पहले 21,116 जाएगा एंड बचा हुआ इसमें से माइनस होगा. दैट इज अ प्रिंसिपल पार्ट. ये होता है रीपेमेंट टेबल. ओके सर. So my 50,000 will be bifurcated over two parts. One is principal, one is interest. Interest तो आएगा and remaining amount is principal. Principal amount I will deduct from 165,516. I will get 136,371 at the end. This is how you were installment. कभी लाइफ में installment pay करोगे तो this is how installments and principal amounts are calculated by banks. ये टेबल सिर्फ सॉफ्टवेयर फॉर्म में आता है एंड सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेट करके देगा. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. हाँ. अरे यार रिद्धि जी, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन हिंदी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल? दिस टेबल मीन्स 50,000 I have bifurcated interest amount and principal amount. Out of 50,000, 24,116 is my interest amount. Remaining amount is my principal amount, and 191,400 I deducted that principal amount to get the final figure 165,516. I will explain only this table. What is the meaning of this table? Riddhi ji, understood or not? Simple meaning of this table. Because he calculated some, he is telling me 191,400 is the principal amount I paid it. Repayment is not 191,400 plus 24,116. Repayment is 50,000. And towards 50,000, first I will use this repayment table. 50,000 for 24,116 is my interest I paid and remaining is principal I paid. And this bifurcation 191,400, if I deduct this principal amount, I will get the 165,516. This is the meaning of this table. And why I am doing this bifurcation? Because every year I want to record it in the profit and loss account, this interest bifurcation. And principal amount I will get from this table. Principal amount I will get from this table. Calculation of present value of minimum lease payment, where discounting factor is given in the question. What is the meaning of this? 50,000 you are paying for the 5 years and 25,000 you are paying for the last year if it calculated on the basis of present terms. So what is this is the outflow in the future. And if I calculate the present value by using the discounting factor, this is my principal amount of an asset. This is the interpretation of this problem. Principal amount is 191,400, but I paid extra. And extra, how much I paid? This is a total. What is that? 83 something tha. And this total ka bifurcation is interest. Okay, 83,600. And this interest, how I have bifurcated, then I want to prepare this table. Annual. And what are my entries? Asset account debit to lessor by principal amount. Then finance charges account debit to lessor. And then lessor to bank. Second year, again, finance charges 20,855 to lessor, lessor to bank. Third year, again, finance charges to lessor, lessor to bank. And at the end, same entries you will do. And at the end, your lessor balance will be 0 if you pass all these entries. But कुछ students समझ ही नहीं पाते कर क्यों रहे हैं. You ask to yourself why we are doing all these things. You will understand that this is the simple bifurcation of repayment amounts total in two parts. One is asset and one is finance charges.
आदित्य जी, और कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको? सर मैं क्लियर हूँ। पूरा क्लियर है आपको अभी? यस सर। 100%? आपने हाँ। एंट्रीज गलत नहीं करनी है, आपने यस सर। कैलकुलेशंस भी करेक्ट करने हैं, और आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो ना, ये एक बार मन से पूछा करो, ओके सर। एवरी वन ऑफ यू। सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, हार्दिक आपके लिए भी है बेटा, आप यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बट whenever you are doing something in CA course, why result is less? Because मैं जो है ना, मैं लॉजिकल करता था. I'm not saying all students are not logical, but 85% students, they are doing it mechanically. They are interested only in solving part. They are not interested in why we are doing these things. सर ने स्टेप्स बता दिए, करो फटाफट फटाफट. कैलकुलेशंस आर लीस्ट थिंग्स, वो लास्ट है, लास्ट. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. चलिए ठीक है, आज का ज्ञान बहुत हो गया. So I hope lease is very simple for you. See, first we calculated from the lessor's angle how much he's getting from this business. He's getting 12.67%. Okay, so he consider UGRV also. We have applied while calculating his guess rate, while calculating his internal rate of return, what is called as implicit over here. We considered discounting factor as a guess rate, and that guess rate we consider over here. Second example, now we have seen the entries in the books of lessee, but lessee won't consider UGRV, as I already explained you. He will consider only 25,000, and discounting factor is given in the question that I will consider, because lessee is not bother for own calculation of interest rate. Then he will consider present value of minimum lease payment or fair value, whichever is lower, and then he will prepare the table which will give him the bifurcation of principal amount and interest amount. Principal amount he will show as an asset, and interest amount, principal amount he will get from the above table only, and interest amount he has to record every year, profit and loss account, interest amount, and that is only the reason we are doing this activity. Okay? अब इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं. आज शांति से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एंड वेडनेसडे को वी विल मीट वंस अगेन with the concept. तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स. यस, एनी क्लोजिंग रिमार्क? क्या नया समझा हार्दिक? हाँ, बोलिए बेटा. सर, लीजेस के बारे में समझा, लीजेस कितने टाइप्स की होती हैं, लीजेस में हम लाइक क्या क्या करते हैं, इंटरेस्ट टेबल कैसे बनाना है, प्रिंसिपल टेबल कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात सर, लॉजिक जो मेरे को आज नहीं आया, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सॉरी आईआरआर एंड एनपीवी का नहीं आया था, वो मेरे को आज समझ. आईआरआर का प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? आईआरआर का प्रॉब्लम? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो उसको री इन्वेस्ट करके लेते हैं, तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, और एनपीवी क्या कंसिडर करता है? एनपीवी सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश कैश आउटफ्लोज, सॉरी कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज. एंड पीआई क्या कंसिडर करता है? कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लोज. एंड व्हेन टू कंसिडर एनपीवी? सर एनपीवी तब कंसिडर करेंगे जब हमारे पास कैपिटल का कॉन्स्ट्रेंट है. और उल्टा बोला, पैसों की कमी नहीं है तो एनपीवी है. सॉरी पैसों की कमी नहीं है तो एनपीवी है, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं है, वी डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट, तो एनपीवी, अगर कॉन्स्टेंट है तो पीआई, जो हमको 1 के टाइम्स में आंसर देता हाँ, 1 रुपए में कन्वर्ट करता है तो पैसों की कमी ना, 1 रुपया मतलब कमी, है. यस तो सर. 1 रुपए में वो कन्वर्ट करता है. एनपीवी रुपीज में आंसर देता है डायरेक्ट एनपीवी में. तो मनी कंस्टेंट होगा तो यू विल गो विद द पीआई, एंड इफ नो मनी कंस्टेंट यू विल गो विद द एनपीवी. एनपीवी. यस बेटा, ये एफएम भी तुझे सिखा दिया अकाउंट्स में. थैंक यू सर. नहीं, यू आर इंटेलिजेंट बेटा, मुझे एक ही बार में तुझे समझ में आता है, नो डाउट इन दैट. चलो लीजिए स्क्रीनशॉट्स. डन सर. ये डायग्राम मत बनाओ, सिंपल लिखना, नहीं तो ये चित्र बनाते बैठोगे. डन सर. कैसे लगा आपको स्टैंडर्ड बेटा ये? सर अच्छा है, मजा आया सर. डन सर.
एक बात बताऊं क्या तुझे? हाँ जी सर। When I was in CA final, 85%, जब 2008 की बात बता रहा हूं मैं, हाँ तो जी सर। 80% स्टूडेंट्स हम लोग जो होते थे ना, हमें लीज ऑप्शन में रखना पड़ता था। समझ में नहीं आता था ये GRV, UGRV। ये खुद से समझ पाते थे क्या आप लोग? नहीं सर, नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो हमें वो सेल्फ स्टडी करना पड़ता था, तो समझ में ही नहीं आता था ये क्या है। डन सर। और हमारे स्टैंडर्ड्स आधे दिन में, 1 घंटे में पूरा स्टैंडर्ड खत्म कर देते थे। कितना स्क्रीनशॉट चल रहा है? 6। सर 6 ही है। हाँ जी सर। डन सर। क्या है बेटा? 7। 7। डन सर। 8। एंट्रीज डन यू सर। अंडरस्टूड नो बेटा? यस सर, एंट्री समझ में आ गया सर। An operating lease is very simple. You will record expenses and income. Are you going to bifurcate it principal and interest way? नहीं सर। Very good. डन सर। So ये बहुत easy है. Screenshot 10. नहीं। डन। Sale and lease back बाद में बताऊंगा बेटा, परसों. डन सर। Easy. You will यस read सर। study material question now and solve each and every question of, and I'm not going to take extra questions for this because this standard is really very simple. We will see some past examination questions. Once you got the logic तो simple है. Thank you and पढ़ते रहो बेटा. आज 10 बजे तक सेशन खींचा. वाह. Okay, thank you sir. थैंक यू सर। Done.